And we are live. Welcome, everyone. This is going to be a good one because we are going to expose the Ether cult. We are going to expose the Ether cult. I hope you can hear me clearly. आवाज़ आ रही है सब बढ़िया से. And very nice. वन लास्ट चेक, ऑडियो चेक कि फ़ोन पे भी यूट्यूब पे मेरी आवाज़ आ रही है बढ़िया से. यस, वेरी वेरी नाइस. जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है वेलकम. आज मैं लिंक नहीं शेयर करने वाला हूँ मीट का. वेलकम एवरीवन. क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे कवर करनी है एंड टाइम भी लिमिटेड है आज, तो बहुत ज़्यादा आई वॉन्ट बी एबल टू स्ट्रेच इट बिकॉज लेट्स सी. क्वांटम इरेजर के चैनल पे अभी तक आ गया होगा नोटिफिकेशन. नहीं आया है. ही यूजुअली पोस्ट्स इट लेट, बट आज सैटरडे इवनिंग है. मेरे लिए सैटरडे नाइट है, उनके लिए सैटरडे आफ्टरनून एंड इवनिंग होता है. एंड सैटरडेज़ को, नॉट एवरी सैटरडे बट वंस इन अ वाइल, एवरी ऑल्टरनेट सैटरडे काइंड ऑफ, क्वांटम इरेजर, नेथन ओकली, ये सारे बॉल बस्टर्स के एपिसोड्स करते हैं. प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बॉल बस्टर्स के अभी 100 से ज़्यादा एपिसोड्स हो गए हैं. मैंने पहले भी बताया कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ मैनी ऑफ दीज एपिसोड्स, और आज भी वैसा एक दिन है जबकि आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड इट स्टार्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 11:30 आई सपोज. इसीलिए मुझे ये जल्दी रैप अप करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. लेकिन आज का जो टॉपिक भी है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है ईथर का. एंड सबसे पहले टू स्टार्ट विथ, हम क्या करने वाले हैं, मैं अपना ईथर का कुछ कॉन्वर्सेशंस बताता हूँ. फ्लैट अर्थर्स ने ये टर्मिनोलॉजीज़ मेरे हिसाब से पक्का से ही सुनी होंगी, ईथर के बारे में टर्मिनोलॉजीज़. अब पूरा जो मैंने इससे पहले के लाइव स्ट्रीम्स में और सालों से सेम टॉपिक्स कवर करता आ रहा हूँ रिगार्डिंग द रिफ्ट इन द फ्लैट अर्थ कम्युनिटी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. ये जो बॉल बस्टर्स वर्सेस ग्लोब बस्टर्स का रिफ्ट है, इसके बारे में डिटेल्स मैंने पहले भी दिया था. एंड नाउ इट हैज़ कम टू द लेवल कि आपस में भी डिबेट कर रहे हैं. द लेटेस्ट ऑफ विच वाज द डिबेट बिटवीन नेथन ओकली एंड जेरन, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले लाइव में बात करी थी रिगार्डिंग अ फ्लैट अर्थर फ्रॉम इंडिया, जो कि जेरन का फ़ैन था और उसको लगता है कि जेरन क्रश्ड नेथन इन दैट डिबेट. एट एनी रेट, मे बी दिस पर्सन has lingered around Nathan's after shows after that debate, and Jaren has been able to convince him that yes, he actually won the debate, even after admitting in the first 5 minutes that science proves things, and that was the debate all about. Jaren called Nathan a scammer for saying that science proves things. So ये साइंस वाला जो टॉपिक है ये अपने पिछले काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैं कवर करता आ ही रहा हूँ. अब टू स्टार्ट विथ, here's a question to all you flat earthers. ये सारे टर्मिनोलॉजीज देख के डज इट रिंग अ बेल? दिमाग में आपके कुछ चलता है ये सब देख के कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ये सारे आर आंसर्स दैट यू गेट फ्रॉम members of a definite cult, and that cult
इज़ द ईथर कल्ट. ईथर बिलीवर्स से जब पूछो कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन यू से ईथर, तो हमें बहुत वैरायटी ऑफ आंसर्स मिलते हैं, जिसमें से सर्टेन नंबर मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है. एंड द क्रेडिट गोज़ टू क्वांटम इरेजर, जो कि सालों से डील करते आ रहा है, तो ही हैज़ मेड अ प्रॉपर लिस्ट. बहुत सारे इसमें टर्मिनोलॉजीज़ उस लिस्ट में से हैं. एंड ऑब्वियसली मैंने खुद भी पिछले इतने सालों में, 6 साल में फ्लैट अर्थ में बहुत बारी ईथर के बारे में सुना है. एंड हियर्स अ कन्फेशन टाइम. मे बी, जस्ट मे बी, आप मेरे पुराने 4 साल पुराने वीडियोस जाके अगर निकालोगे तो हो सकता है कि वहाँ पे मैं भी कहीं पे ईथर के बारे में बात कर रहा हूँ एज एन आइडिया कि सी निकोला टेस्ला और ऐसा ऐसा मिकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट था जिससे कि ईथर प्रूव हो गया था. तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स, यस, एक टाइम पे जब नया नया फ्लैट अर्थर बना था, आई वॉज एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, तो उस टाइम पे ईथर द वर्ड गॉट टू मी ऑल्सो. बट थैंक हेवेंस कि अल्टीमेटली अपने जो ट्रूथ सीकिंग एटीट्यूड, ट्रूथ सीकिंग नेचर के वजह से मैं फ्लैट अर्थ बना था, वही सेम चीज़ लेके जब मैं आगे बढ़ा तो आई गॉट टू नो कि नहीं भाई, ये ईथर वगैरह जो बताते हैं, दे ऑल दोज पीपल आर जस्ट पेडलिंग हॉर्स शिट. एंड सिर्फ वही लोग जो कल्ट फॉलोअर के जैसा सारा कुछ सुन लेते हैं जस्ट बिकॉज समवन इज़ अ फ्लैट अर्थर. वेस्टर्न फ्लैट अर्थर्स कितने महान हैं, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में अच्छे से कवर किया था. फ्लैट अर्थर्स हु आर इन डिनायल. बट देन ऑब्वियसली मेरे पे भी सवाल उठ सकते हैं कि तुम भी तो नेथन ओकली के फ़ैन बॉय हो, ये इल्ज़ाम मेरे पे लग ही चुके हैं. येस, आई डू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स. बट if you actually understand the point, then the point is about having good arguments as a flat earther. हम लोग उस क्वेस्ट में एक दूसरे को अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं इन गुड फेथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इफ़ यू आर डूइंग इट जस्ट टू डिफेम अदर्स फॉर योर पर्सनल बेनिफिट्स, देन इट इज़ अनएक्सेप्टेबल. और ये तो फ्लैट अर्थ की भी बात नहीं हो जाती है फिर, ये तो पर्सनल लेवल पे भाई फ्लैट अर्थ है या नहीं है, तुम जानते हो नहीं जानते हो अलग बात हो गई. लेकिन ट्रुथ कोई अपने हिसाब से सच बोल रहा है, ये चीज़ को दबाने का तो कहीं पे भी सवाल नहीं पैदा होना चाहिए. एनीवेज, ईथर सुना होगा आप लोगों ने. इट इज़ द बैकग्राउंड मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. बहुत लोग फ्लैट अर्थ ग्रुप में, यूट्यूब पे भी मैंने सुना है एक्सक्यूज मी, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं. मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ जब मौका मिला है, जो भी ये बोलते हैं आवर यूनिवर्स इज़ इलेक्ट्रिक, आवर यूनिवर्स इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैंने डायरेक्ट सवाल पूछा उनसे, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से आवर यूनिवर्स इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, if not every single time, I have got some vague answer, ambiguous response. कोई सर पैर नहीं है वैसे रिस्पॉन्स का कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं. अजीब अजीब चीज़ है. ओ देयर इज़ लाइटनिंग इन द स्काई, हेंस द स्काई इज़ इलेक्ट्रिक. ओके, बट you'd be good without making a claim about it also. Okay, we see lightnings. Yeah, that's a fact. सबको दिखता है. जब उससे आगे आप कुछ क्लेम कर रहे हो, प्लीज़ डू समथिंग टू सब्सटैंशिएट इट ऑल्सो, डेमोन्स्ट्रेट इट अदरवाइज. ठीक है. सो ये वैरायटी ऑफ आंसर्स हैं जिसमें कि मोस्टली ये मीडियम वाले आंसर्स सबसे कॉमन आपको दिखेंगे, और दे मेक इट अ काइंड ऑफ अ मेटाफिजिकल मीडियम कि नो, इट इज़ नॉट फिजिकल, it is something which interacts with the physical, and that is how light propagates. But the thing in itself, what we call ether, is metaphysical. अभी लेटेस्ट अपने
डिबेट में विथ ब्रायन ऑफ बॉल बस्टर्स क्रैंग. ब्रायन इज़ अ गुड फ्रेंड. हे ब्रायन, शाउट आउट. ब्रायन्स लॉजिक इज हिज चैनल. तो उसके साथ विटसेट का जो डिबेट हुआ था उसमें द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ ईथर is that it is an interpretive framework for the background medium. It is not a thing, it is an interpretive framework, whatever that means. So yes, Whitset अभी finally जैरन गलत है. साइंस के बारे में वो लोग जो बात करते हैं लाइट के बारे में, जो कि अगेन वी विल सी इफ़ वी गेट टाइम, हम लाइट पे, फोटोन पे, वेदर लाइट इज़ अ वेव और अ पार्टिकल, इन सारे पॉइंट्स पे भी आएंगे लेटर ऑन. एंड यहाँ पे बहुत सारे जो डेफिनेशंस हैं, द लास्ट वन ऑफ स्पेशल मेंशन हियर, मैं नाम नहीं लूँगा और कुछ स्क्रीनशॉट्स अपने व्हाट्सएप से मैं आज शो करने वाला हूँ यहाँ पे. बट I have been cautious to erase all the phone numbers and names, but फिर भी एक दो जगह पे आपको पता चलेगा कि जहाँ पे मैंने छोड़ दिया है intentionally. So ये this quote is from a guy named Vivek. There are so many Viveks in India, इसीलिए पूरा नाम जब तक मैं नहीं बता रहा हूँ, I think it's fine. You can just think of any Tom, Dick or Harry. विवेक से मैंने जब डायरेक्ट पूछा था व्हाट इज़ द ईथर, तो ये जवाब मुझे मिला था आंसर. एंड लाइक आई सेड, मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो मैं यहाँ पे इंडिया में सुनता हूँ, पीपल आर पैरटिंग स्टफ दैट दे हैव हर्ड इन अदर वीडियोज़, इन अदर फ्लैट अर्थर चैनल्स, without thinking about the arguments twice. Oh, it's such a good idea. What's the fault in exploring new ideas outside the purview of mainstream science? These are the same people who say gravity is pseudoscience and then throw the baby out with the bathwater and claim that science doesn't prove anything, science is worthless. And at the same time, you can imagine the level of doublespeak. At the same time, people like David Weiss, Whitset gets it, Jeranism, so many other flat earthers here in India, I have pointed it out a number of times, use words like science, scientific, scientifically in their own arguments, after already having dumped the baby out with the bathwater. ये डबल स्पीक, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन से मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को. जस्ट लाइक नेथन ओकली इज ट्राइंग टू ड्राइव होम दिस सेम पॉइंट टू ऑल दीज वेस्टर्न फ्लैट अर्थर्स. चलो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ऑर्डर ऑफ थिंग्स. नेथन ओकली का एक वीडियो प्ले करना है ऑफ अबाउट 15-20 मिनट्स, तो वो तो प्ले करना ही पड़ेगा. इट इज़ ऑल अबाउट दिस ईथर कल्ट जो जेरनिज्म, विटसेट, डेविड वाइस इन लोगों ने बनाया है इन द फ्लैट अर्थ कम्युनिटी. देयर आर मैनी फॉलोअर्स ऑफ इट. इंडिया के जो भी फ्लैट अर्थर्स सुन रहे हैं, बी रेडी टू फेस माई क्वेश्चंस. आज से 1 साल पहले, नियरली अबाउट एग्जैक्टली a year ago, around this time, ये हफ्ता पिछले साल का जो चल रहा था, उस टाइम पे मेरा इंडिया के फ्लैट अर्थर्स के साथ व्हाट्सएप पे ईथर रिलेटेड थोड़ा मोड़ा आर्ग्यूमेंट्स हुआ था. एंड इट वाज एज एक्सपेक्टेड. जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही चीज़ है. तो उस आर्ग्यूमेंट से देयर इज़ दिस लास्ट वन, द अंडरलाइंग मीडियम विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट even in a vacuum. Go figure. So, ये मीडियम जो हम सुन रहे हैं बार बार, ये क्या है? इससे पहले जो थंबनेल है, इस पे मैंने बहुत कलर ट्राई किए वाइट के अलावा, लेकिन बहुत क्लियरली नहीं नज़र आ रहा था बिकॉज ऑफ ब्राइट पेल फेस ऑफ आइंस्टाइन.
फिर भी आई थिंक इट टर्न आउट गुड इनफ। तो ये विदिन कोटेशन मार्क्स मैंने क्यों लगाए हैं आइंस्टाइन के चेहरे के ऊपर? That's the real interesting part that you will get to know towards the end of the video. I will give you a preview कि बहुत सारे जो ईथर बिलीवर्स हैं वो क्या बोलते हैं। मिकेल्सन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर एंड दैट द अर्थ इज़ नॉट स्पिनिंग, एंड इन ऑर्डर टू डू अवे विद द ईथर Einstein came up with relativity and did exactly that. He did away with the ether. Strangely enough, ये जो quotation marks हैं, you can attribute them to this person, Einstein. He said, practically, there exists an ether. Space without ether is unthinkable. All you cult members, you parrots, research what you are talking about. So, हम आते हैं अपने कॉन्वर्सेशंस में। ये कुछ एक चीज़ों पे हम थोड़ा बाद में फोकस करेंगे एंड हम डायरेक्टली सबसे पहले मैं आपको अपने कॉन्वर्सेशंस ही दिखाता हूँ। इनका ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट एज यूजुअल माई क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ, हे यू जस्ट क्लेम्ड समथिंग अबाउट द ईथर, व्हाट्स दैट, व्हाट्स द ईथर? दिस गाय कोडेड रेड, द रेड गाय, वो is an anonymous fellow. Many people have questioned कि भाई कौन हो, क्या हो, नहीं, बातें बड़ी बड़ी, लेकिन anonymous रहना है, किसी को पता नहीं चले. I know his name still. So उसने एक वही घिसा पिटा इंस्टाग्राम का इधर उधर जो कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शंस रहते हैं उस टाइप का एक कुछ पोस्ट किया था जिसमें ईथर के बारे में लिखा हुआ था. तो मैंने पूछा व्हाट्स द ईथर, तो तुरंत ही पलट गया कि यार ईथर बोलो एटमॉस्फेयर बोलो एक ही बात है. साइंस में उसी चीज़ को एटमॉस्फेयर बोलते हैं जिसको ईथर बोलते हैं. सो भाई नेचुरल क्वेश्चन, सो द ईथर इज़ द एयर अराउंड अस, इज़ दैट व्हाट यू मीन? बिकॉज दैट्स व्हाट एटमॉस्फेयर मीन्स. ही जस्ट सेड कि ईथर बोलो एटमॉस्फेयर बोलो एक ही बात है. एटमॉस इज़ एयर और वेपर, एंड वी ऑल नो दैट इट्स नॉट अ स्फीयर. मैं जब भी इसीलिए एटमॉस्फियर वर्ड यूज़ करता हूँ, द कोलोकियल यूसेज ऑफ द वर्ड, इट्स द एयर अराउंड अस. बट सिंस एयर डज नॉट हैव अ शेप, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू कॉल इट एटमॉस्फियर. इट ओनली फिट्स इन द presupposition of a globe with a blanket of atmosphere all around a spherical ball. So उस पार्ट को इग्नोर अगर कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर मतलब एयर मीन कर रहे हो, चारों ओर का जो एयर है. सो ईथर इज द एयर. सो ही डिड नॉट डिनाई इट, ही जस्ट वेंट ऑन विथ व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दैट. दैट मीन्स इट इज ग्रांटेड. ओके, he said कि that's how old structures generated electricity from air around us. Again, Tartaria or Atlantis or free electricity or Nikola Tesla or think in terms of energy, frequency, vibration. Oh my god. Stop parroting. Try to understand things. It's all the more painful जबकि ये काम मुझे फ्लैट अर्थर्स को बोलना पड़ रहा है. फ्लैट अर्थर्स रिसर्च व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज जस्ट फ्लैट अर्थ एक टॉपिक मिला और उसको आपने पकड़ लिया और दिन भर क्या करते हैं कि अरे ग्लोबीज कितने बेवकूफ़ हैं, ग्लोबर्स कितने आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं. दूसरे फ्लैट अर्थर्स के साथ दिन भर ग्लोबर्स को नीचा दिखाने में बहुत मज़ा आता है. We were all that
आई एम नॉट सेइंग कि ग्लोबस का मजाक उड़ाना गलत है, मैंने कभी नहीं उड़ाया है, बट वो आर्ग्यूमेंट्स पे होना चाहिए। जब आप किसी को बता रहे हो, आर्ग्यूमेंट समझा रहे हो, वहाँ पे वो स्टूपिडली बिहेव करे, समझ के भी ना समझे, सिंपल चीज़ नहीं समझ सके, उसके बाद आप किसी को स्टूपिड बोल रहे हो। जैसा कि अब मैंने अपने साइंस 101 जो प्रीवियस 2 अपलोड्स हैं, शामल दा को में भी बहुत कुछ ऊपर नीचे मैंने बोला होगा उस वीडियो में, बट इट वॉज ऑल अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स। वी आर स्टिल स्टक देयर, अभी भी आगे नहीं बढ़े हैं। लोग ग्रेविटी का रिप्लेसमेंट ढूंढ ही रहे हैं। ईथर क्या होता है और ईथर के वजह से कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वर्ड्स फेंकते हैं बस, जहाँ मिला कोई भी वर्ड फेंक दिया, यहाँ जिसको पकड़ना है पकड़ लेगा। मैं पहले पकड़ता था 1 साल पहले तक, धीरे धीरे समझ गया कि भाई यहाँ पे सब इधर उधर फेंकते ही रहते हैं। देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज़ नो पॉइंट इन एनी कॉन्वर्सेशन। तो अभी आई डोंट केयर मच, ये सारे कॉन्वर्सेशंस एज यू कैन सी 1 साल पहले के हैं, 6 सितंबर 2022। देयर आई एम आस्किंग व्हाट्स द ईथर। So he went on to say, that's how old structures generated electricity from air around us. So I reiterated, so ether is air then. Cool, makes perfect sense. Sarcasm. तो उसके आगे उसने लाइट को कुछ बोला था उसी वाले फोटो में ये भी लिखा हुआ था कि लाइट इज़ बोथ अ वेव एंड अ पार्टिकल, दैट इज़ द मेन स्ट्रीम नैरेटिव। अब ये फ्लैट अर्थर्स है, मेन स्ट्रीम नैरेटिव कैसे मान ले, जो कि गलत है मेरे हिसाब से भी, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, जस्ट उसका ऑपोजिट बोलेंगे कि लाइट इज़ नीदर पार्टिकल नॉर अ वेव। व्हाट इज़ इट? ओह माय गॉड, विट्सिट इज़ एट देयर रेस्क्यू। विट्सिट का 2-4 बात सुनेंगे। इट इज़ एक्चुअली द पर्टर्बेशन ऑफ द बैकग्राउंड मीडियम एंड इट इज़ द इंडक्शन बाय विच, ओ माय गॉड, ऐसे 2-4 भारी भरकम सेंटेंसेस सुनेंगे तब तो लगेगा कि हाँ फ्लैट अर्थर ने कोई बात बोली है यार। हाँ, सो वही sarcasm, just like light is neither wave nor particle, it's just the vibration of particles in a higher magnitude. Perfect. So yeah, I was looking for ki if light is neither wave nor particle, then what is it? This is what it is according to this joker. It is just the vibration of particles in a higher magnitude. It is not a particle but it's the vibration of particles. Go figure. निकाल लो जो मीनिंग निकालना है इन सब चीज़ों का। सो उस टाइम से पहले भी ये हैंडशेक गाय से, कोड रेड से बात करना मैंने छोड़ ही दिया था बहुत पहले से। एंड अनदर वन ऑफ द कल्ट मेंबर्स पॉप्स अप, मिस्टर ब्लू, कोड ब्लू, विवेक। उसने मेरे ईथर इज़ एयर देन कूल मेक्स परफेक्ट सेंस मेरे को इसको रिस्पॉन्ड करते हुए उसने बोला कि अरे नहीं, वो बेचारा संभाल नहीं पाया तुम्हारे क्वेश्चन को, मैं संभालूंगा। आई एम अ मोर रिलीजियस फॉलोअर ऑफ माई कल्ट, आई नो द थिंग्स मोर अप्रोप्रिएटली, आई हैव बीन इंडॉक्ट्रिनेटेड इन अ बेटर वे, रादर आई हैव इंडॉक्ट्रिनेटेड माई सेल्फ। So आए यहाँ पे कोड ब्लू, ether is the underlying medium which is always present even in a vacuum. That is how energy propagates in nature. We are talking about propagation of energy. In general जो मैंने शुरू में दिखाया था कि it is propagation of electromagnetic waves. Electromagnetic waves को आप energy रेफर कर सकते हो, ये सब कुछ ढकोसला है. I'm not agreeing to all this. I'm just saying कि this is what we get to hear when ether believers, these cult members, are asked about their religion. So, to the question,
Ether is the underlying medium which is always present even in a vacuum. My simple question was, is ether physical or metaphysical? Physical, matlab existing in reality, observable, we can see it. It has mass or energy. Metaphysical is beyond physical. Metaphysics is philosophy, philosophical ideas, right? तो ईथर अगर फिलॉसफी है तो फिर भाई फिलॉसफी किसी रियल ऑब्जेक्ट को, रियल वर्ल्ड को इम्पैक्ट नहीं करता है. एंड दैट इज़ वन पॉइंट ऑफ देयर डबल स्पीक, जहाँ पे वो दोनों ही बातें करते हैं कि नहीं, वो एक्चुअली है मेटाफिजिकल, it is just an interpretive framework, it is a concept, but then light propagates because of it. Waves, electromagnetic waves propagate, energy propagates because of it. If it was not there, light will not travel. Light would not have traveled. You get it, I suppose. It's not that difficult. Cult को एक्सपोज करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है. जस्ट कि आपको पता होना चाहिए, आपका ब्रेन वॉशिंग ब्रेक हो जाना चाहिए. जस्ट लाइक ग्लो बर्थ से हमारा ब्रेन वॉशिंग किसी न किसी दिन टूटा था, और उसके बाद से हमें लगने लगा कि अरे हाउ कुड वी हैव एवर बिलीव्ड इन सच स्टूपिड थिंग्स. इट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर, राइट? बट देन जब तक आप उस ब्रेन वॉशिंग के इन्फ्लुएंस में थे, यू डिड नॉट फिगर इट आउट, तब तक तो इट ऑल मेड सेंस ना. सिमिलरली दीज ईथर बिलीवर्स, मे बी ये लोग अपने कल्ट में सच में इतना बिलीव करते हैं कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली उनके दिमाग में सेंस बना रही होंगी. somehow they are able to reconcile all these seemingly reconcilable ideas and thoughts, self-contradictions. तो फिर उसने मिस कर दिया मेरा. अरे मैंने पूछा ईथर फिजिकल है मेटाफिजिकल है, 6 सितंबर निकल गया. कुछ नहीं बोला. आई डोंट नो, देखना पड़ेगा टाइम. हाँ, पिछले दिन शाम को पूछा था, अगले दिन कुछ नहीं बोला, तो शायद अगले दिन मैंने बोला उसे फिर कि हे विवेक, यू माइट हैव मिस्ड द क्वेश्चन यस्टरडे. छोड़ूंगा तो नहीं भाई, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं. Is the underlying medium which is always present physical in nature? If not, then what kind of a medium is it? By the way, this Vivek guy, as it turned out later, I suppose, बहुत उसके बाद मेरी बहस हुई थी उसके साथ. And as it turns out, ये हमेशा बात करता था उसके पहले फ्लैट अर्थ बन के, फ्लैट अर्थर बन के, ग्रुप का एडमिन वैडमिन है. फिर धीरे धीरे जब सवाल मैंने अंदर पूछे तो पता चला ही इज़ एन एग्नोस्टिक, ही इज़ ऑन द फेंस, ही इज़ नॉट मेड अप हिज माइंड येट. वो वाले डिस्कशन के बाद बहुत लोगों ने सवाल उठाया था कि अरे एडमिन है ऐसा जो खुद नहीं श्योर है. फिर पता नहीं कुछ दिन गायब था. मेरा भी बहुत मूड ख़राब हो गया था उस ग्रुप से. आई वॉज नॉट गेटिंग एनी थिंग सब्सटैंशियल and I was kind of disillusioned by that group, which I have expressed before. तो वही है, विवेक ने भी थोड़ा उस टाइम के बाद देखा कि आई ऑब्जर्व्ड कि बहुत ज़्यादा पहले जितना करता था बात उतना करना छोड़ दिया. बट ही हैज़ resurfaced now and once again started talking as a flat earther, as if he is one amongst us. Things need to get clarified once again, I suppose. So, look at his response, code blue. It's like asking whether consciousness is physical or metaphysical. I have a lot of words in my mind. बोल दूँ तो hurt हो जाएंगे ये लोग. But it's something that ends with tarred. I don't think this needs to be commented upon. क्या लेना देना था मैंने जो पूछा उसका? मीडियम
ये सवाल इसीलिए इतना अजीब है बिकॉज मीडियम सिर्फ फिज़िकल चीज़ें ही होती है. यू कांट थिंक ऑफ अ मीडियम विच इज़ नॉट फिज़िकल. मीडियम का कोई भी डेफिनेशन जाके देख लो, वो फिज़िकल ही होगा. व्हाट डू यू मीन कॉन्शियसनेस? आई नो ये घूम फिर के वो क्वांटम मैकेनिक्स और इट्स द नॉलेज ऑफ द ऑब्जर्वर विच मेक्स द फोटोन अपीयर, ऐसा ऐसा आर्ग्यूमेंट्स होंगे इसके कि दैट्स हाउ कॉन्शियसनेस कम्स इन टू प्ले. बट हम रियलिटी, रियल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं. मीडियम, इज इट अ थिंग? कैन यू शो इट टू मी what medium you are talking about? Can you demonstrate? If it is an invisible medium, can you demonstrate? Because air is also an invisible medium. But it is physical. It is matter. But the medium you are talking about is supposedly, I think so, if I'm right in your understanding, is metaphysical. It is just an interpretive framework. Frameworks do not have matter or energy. They do not exist in reality, in physical reality. So मेरा question बिल्कुल apt था, because his stance is stupid. He can't help but come up with such stupid responses. अब उसके बाद this code red resurfaces again. लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा साइड कर दिया कि ठीक है भाई, तुमने तो बोल दिया ना कि ईथर इज़ एयर. यू आर वेरी क्लियर विथ योर अंडरस्टैंडिंग एंड यू कन्वेड इट एज इट इज़. ईथर इज़ द एयर. जस्ट दैट क्लेम्स मेड बाय अदर्स अबाउट द ईथर डू नॉट मैच योर्स. तुम्हारे दूसरे कल्ट मेंबर्स जो तुमसे ज़्यादा रिलीजियस हैं, वो जानते हैं कि नहीं भाई, ईथर को एयर बोलना सही नहीं है. Because of the reason I just explained. Air is physical. What you're claiming is metaphysical. So make up your mind. Be ready with an answer. जो भी ईथर तुम बोल रहे हो, is it physical or non-physical? Supernatural. जो भी है उसका जवाब कि भाई इज इट दैट दिस और इज इट दैट, इज इट फिजिकल और मेटाफिजिकल, उसका कोड रेड ने क्या जवाब दिया? इट कैन बी बोथ एट सेम टाइम. समथिंग कैन बी बोथ फिजिकल एंड मेटाफिजिकल एट द सेम टाइम. एग्जाम्पल पूछो कोई इससे. एज स्टूपिड एज इट मे साउंड, लेकिन यस, इट विल बी एंटरटेनिंग. इसलिए एग्जाम्पल पूछना चाहिए इससे. एक एग्जाम्पल दो ना, ऑफ एनी थिंग अंडर द सन, एनी ब्लडी थिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज बोथ फिजिकल ऑल्सो एंड नॉन फिजिकल ऑल्सो. माय गॉड. विवेक ने जो बोला था, इट डिपेंड्स, पार्टिकल्स बिहेव डिफरेंटली ऑन द माइक्रो एंड मैक्रो स्केल. दैट्स सच अ बिग फैलेसी जिस पे कि हम आएंगे थोड़ी देर पे. मैंने रियली, टू गेट हिम बैक टू द पॉइंट, व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद द क्वेश्चन आस्क्ड? बोथ क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स deal with the physical. Science has got nothing to do with the non-physical world. ईथर क्लेम करते हैं ना कि अरे ये तो साइंस है, मिकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट और क्या क्या एक्सपेरिमेंट, सैगनैक एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ईथर का एग्जिस्टेंस पता कर लिया है, बस डिफाइन नहीं कर पा रहे कि होता क्या है. वो कुछ तो है. जो एक आंसर ये भी था, दिस वन, इट इज़ एवरीथिंग. अरे ईथर इज़ एवरीथिंग. ये थोड़ा सा अपना जो हिंदू फिलॉसफी है, जिससे कि आप ये भी डिराइव कर सकते हो, द वननेस, ऑल इज़ वन एंड वन इज़ ऑल. यू डू नॉट एग्जिस्ट, देयर इज़ नो आई, ओनली गॉड. You do not exist, only God exists. Therefore, you are God.
दिस इज फनी शिट. आई डोंट नो मेरे ऑडियंस मेंबर्स एंजॉय कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, इवन फ्यूचर वॉचर्स, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत फनी भी है एट द सेम टाइम. गुड एंटरटेनमेंट. तो वेयर वर वी? ईथर बिलीवर्स के मैच आपस में ही नहीं मैच करते हैं, उनके क्लेम्स आपस में ही नहीं मैच करते हैं. अब कोड ब्लू ने एक लंबा चौड़ा आंसर दिया, बस एक दो ही है. सो हम सबसे पहले डील करेंगे उसका क्लेम कि क्लासिकल अलग होता है, क्वांटम अलग होता है. दिस गाय हैज़ नो क्लू. आज के डेट में ऑल फिजिक्स इज क्वांटम फिजिक्स. इट्स नॉट लाइक कि माइक्रो स्केल पे थिंग्स बिहेव डिफरेंटली एंड मैक्रो स्केल पे थिंग्स बिहेव डिफरेंटली. जस्ट कि माइक्रो स्केल पे यू आर एबल टू कंट्रोल ऑल द वेरिएबल्स, मैक्रो स्केल पे इट इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल. Hence, it may seem weird, but quantum mechanical explanation के according एक फुटबॉल भी एक पोजीशन पे स्थिर नहीं है. उस पे आ जाता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि इफ़ यू नो द पोजीशन देन यू डोंट नो द मोमेंटम, द मोर यू नो अबाउट द वन द लेस यू नो अबाउट द अदर. तो ये सारे आइडियाज़ आ जाते हैं, इक्वेशंस आ जाते हैं. बट ऐसा नहीं है कि क्वांटम मैकेनिक्स स्टॉप्स वर्किंग और द लॉज आर डिफरेंट फॉर द मैक्रो वर्ल्ड. ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर क्वांटम मैकेनिकल लॉज. क्लासिकल फिजिक्स मोस्टली लोग न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से एसोसिएट करते हैं. जो बेवकूफ़ हैं वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं. बट साइंस ऑफ 101 वाले वीडियो में मैंने ये भी कवर किया था कि न्यूटन वॉज द वन आस्किंग अदर साइंटिस्ट्स, रिक्वेस्टिंग rather commanding other scientists not to ascribe gravity to Newton, to himself. वो इतना weird idea उसने propose भले ही किया था, लेकिन उसने बोला था कि ये बस एक weird idea है और कोई भी someone in his right mind should not be accepting this strange idea. So anyways, classical physics, all of it was superseded by quantum mechanics. Gravity, Newton's gravity was superseded by theory of relativity by Einstein. And Einstein, it may come as a surprise, but Einstein himself was an ether believer. Just like most of the scientists of that era. Maxwell, जिससे Maxwell's equations आए हैं, Huygens प्रिंसिपल, हाइजेंस या ह्यूजेंस सुनते थे हम कॉलेज में, स्कूल में, बट हाइजेंस, ये सारे लाइट को समझने की कोशिश कर रहे थे. एंड इट ऑल स्टार्टेड राइट अराउंड द टर्न ऑफ द 19th century in 1801 with थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिससे कि एस्टैब्लिश हुआ कि लाइट इज़ अ वेव. ऑल्दो it turned out to be a false idea, but this is what started the conception of light as a wave, the double slit, which is interference of light or diffraction of light. Light interferes with itself and causes diffraction. अब ये सिर्फ हमें waves में दिखता है, since we can also observe it in lights. तो ये जो luminiferous ether, ये एक टर्म दिया गया to the background medium, which is only hypothetical. वो बस एक इंटरप्रेट करने का तरीका है. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जहाँ पे आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेसिकली यू emit a photon or an electron or any subatomic particle from one end. दो स्लिट्स होते हैं, उन दोनों स्लिट से इलेक्ट्रॉन होते हुए एट द सेम टाइम अदर साइड पहुंच के
एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे हिट करता है, फोटो सेंसिटिव फिल्म पे। तो इसका एक हमारा क्वांटम मैकेनिकल जो एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ वाइडली regarded as the best explanation or the most accepted explanation, which is the Copenhagen interpretation. बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है ये श्रोडिंगर्स कैट का। तो Copenhagen interpretation. The Copenhagen interpretation explains that a quantum particle does not exist in one state or another, but in all of its possible states at the same time. Basically, दो पॉइंट्स के बीच में वो फोटोन कहाँ पे है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है और कोई नहीं क्लेम कर सकता है। हमें बस पता है कि पॉइंट ए से वो निकला और पॉइंट बी पे जाके टकराया। बीच में दो स्लिट्स हैं, तो वो स्लिट ए से गया या स्लिट बी से गया। इफ़ यू आर नॉट ऑब्जर्विंग इट, यू कैन नॉट कॉमेंट एनीथिंग अबाउट इट, राइट? रिचर्ड फाइनमैन, नोबेल लॉरिएट, नॉट दैट आई एम फॉन्ड ऑफ देम, लेकिन फिर भी नोबेल लॉरिएट है वो क्वांटम फिज़िक्स का। ही इज़ एन एथियस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक कोट है कि इफ़ यू थिंक यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स, देन यू डू नॉट अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। बिकॉज यही पॉइंट है ना कि पॉइंट ए से पॉइंट बी इंटरप्रिटेशन करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बट नन ऑफ इट हैज़ टू डू विद द एक्चुअल साइंस ऑफ थिंग्स। जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उसका इस इंटरप्रिटेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। जस्ट टू ब्रीफ आउट द insanity or the weirdness in this interpretation is श्रोडिंगर्स कैट का जो एग्जांपल है, एक बॉक्स के अंदर एक कैट को आपने छोड़ दिया और फिर एक रेडियो एक्टिव मटीरियल विच इज़ पॉइजनस उसको भी साथ में छोड़ दिया। नाउ इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ चांस कि वो रेडियो एक्टिव मटीरियल डीके करेगा या नहीं करेगा। अगर वो रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो फिर कैट मर जाएगा, अगर वो रिएक्शन नहीं स्टार्ट होगा तो कैट ज़िंदा रहेगा अंदर में। नाउ आपने कैट को और रेडियो एक्टिव मटीरियल दोनों को बॉक्स के अंदर डाल के बंद कर दिया। नाउ श्रोडिंगर्स कैट का जो थॉट एक्सपेरिमेंट है, लेट्स रीड दैट पार्ट। इन श्रोडिंगर्स इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट, you place a cat in a box with a tiny bit of radioactive substance. When the radioactive substance decays, it triggers a Geiger counter which causes a poison or explosion to be released that kills the cat. Now, जब तक आप डब्बा नहीं खोल रहे हो, आपको नहीं पता कि अंदर में वो केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन चांस, बाहर से आपको नहीं पता है। अब जब तक आप उस बॉक्स को खोलते नहीं हो, तब तक मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप सोचो तो द कैट इज़ बोथ अलाइव एंड डेड इनसाइड दैट बॉक्स एट द सेम टाइम, बिकॉज बोथ दीज आर पॉसिबिलिटीज़। जब तक बॉक्स आपने खोला नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटी का जो ग्राफ बनेगा उसमें ग्राफ ऐसा होगा कि द कैट एग्जिस्ट्स एंड नॉट एग्जिस्ट्स, और द कैट इज़ अलाइव और डेड, ये दोनों ही हो सकते हैं उस पॉसिबिलिटी में। सो इसीलिए इट इज़ नॉट अबाउट इंटरप्रिटेशन। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स इज़ एन एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड फील्ड ऑफ साइंस। जब आप बोलते हो कि हीलियोसेंट्रिज्म गलत है और एवोल्यूशन गलत है, डज नॉट मीन कि ऑल ऑफ फिजिक्स, ऑल ऑफ बायोलॉजी, एवरीथिंग इन साइंस गलत है। इट मीन्स कि आपको समझने की ज़रूरत है कि हम जब साइंस वर्ड यूज़ करते हैं तो क्या मीन करते हैं। दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट? नाउ बैक टू द पीपीटी, यहाँ पे जल्दी से पढ़ते हैं। बट दीज पार्टिकल्स डोंट बिहेव एज एक्सपेक्टेड ऑन सब एटॉमिक स्केल्स टू द पॉइंट यू कैन कंसिडर इट मेटाफिजिक्स। नॉट टू मेंशन no particle is at a fixed position until it is observed. Like I said,
Turns out these subatomic particles behave differently just by the act of observation, which means it is again linked to consciousness, which is metaphysical, that is, it can't be defined. बताया मैंने, ये सब कुछ आएगा. Just to shield the fact that ether exists, they come up with new pseudoscience like dark energy and dark matter, because Michelson Morley proved that there was no motion of Earth through the ether. So in order to discredit the ether altogether, Einstein worked really hard because it was the end of Newtonian paradigms. End of Newtonian paradigms, true, but not by abolishing the ether. By his theory of relativity, by creating a new mathematical paradigm, pseudo-Riemannian fourth dimension space-based paradigm, space-time paradigm, which is only mathematics. उसके बाद rest of it is interpretation of that mathematics. So उसको scientific community ने accept कर लिया does not mean कि वो science बन गया. Science का मतलब होता है experimentally validated. It is a very robust method. इसीलिए साइंस को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि कोई अगर बोल रहा है कि यार ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है यार, तो इसीलिए साइंटिफिक वर्ड इतना मीन करता है. और यही रीज़न है कि ग्लोब वाले जो साइड हैं, जो एलीट्स हैं, द पावर्स दैट बी द कंट्रोलर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया को हीलियोसेंट्रिक मॉडल से बेवकूफ़ बना रहे हैं, दे यूज़ द वर्ड साइंस बिकॉज द वर्ड हैज़ पावर. हमने बहुत सारे फील्ड्स में साइंस एक्चुअली वर्क्स एंड साइंस इज़ अ रोबस्ट मेथड ये पाया है, राइट ये अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया है हमने. नाउ बिकॉज globe earthers want to take that power of the word to lend credence to their horse shit, they use the word without actually having gone through the method. And that's the definition of pseudoscience. बोलते हो ना, as a flat earther, globe is a pseudoscience, evolution is pseudoscience, heliocentric model is pseudoscience, Big Bang is pseudoscience. On what basis are you saying these things? Because they do not follow the scientific method. चलो ये वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बात कर दी, क्योंकि that is going to be our climax कि ether did away with the, I'm sorry, Einstein did away with the ether. So when I said to Mr. Handshake, Code Red, it doesn't make sense to me. If it floats your boat, cool. So do advise what exactly you trying to figure it out. बहुत ही इसका पेनफुल होता है इसका इंग्लिश पढ़ना भी. So my last words were क्या ही और बोले आगे. Suffice to say that the proof ether exists is, जो इन दोनों ने रेड एंड ब्लू ने प्रोवाइड किया, इज दैट इट हैज़ टू एग्जिस्ट. अरे सो दिस इज़ बेसिकली अ क्लासिक केस ऑफ आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस फैलेसी. हम उस पर भी अच्छे से एक स्लाइड है मेरा, डिस्कस करेंगे कि भाई तुम प्रूव करके दिखाओ कि मैंने जो बोला वो गलत है. तुम नहीं प्रूव कर सकते कि गलत है तो मैं सही हूँ. तो समझा नहीं कि भाई उसने जो बोला कि कॉन्शियसनेस लाइक आस्किंग वेदर कॉन्शियसनेस इज़ फिजिकल और मेटाफिजिकल, तो इज़ दैट अ येस और अ नो. अ मीडियम इज़ फिजिकल. उसके बाद मैंने ज़्यादा और समझ में आ गया कि इसके पास आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है. आई जस्ट स्टेटेड माई पॉइंट. अ मीडियम इज़ फिजिकल. इफ़ यू डिसअग्री, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फिजिकल मीडियम अदर दैन द ईथर ऑफ कोर्स, विच वॉज योर क्लेम. इसमें कोड रेड, इट कैन बी बोथ. सच अ क्रिंज फेस्ट. चलो ये कॉन्वर्सेशंस तो फ़िलहाल इतने ही दिखाने थे, बट यू गेट द पॉइंट कि दिस इज़ व्हाट वी आर हैविंग टू डील विथ, एंड दीज आर पीपल हु कॉल देमसेल्व्स फ्लैट अर्थर्स, but do not think twice before parroting things they have heard from other so-called higher up
flat earthers. चलो लास्ट में टू एंड इट, व्हाई इज देयर वैक्यूम एनर्जी? ईथर बिलीवर बोलता है nothing which is a true vacuum cannot exist. Therefore, there must be a non-manifested medium in a vacuum for electromagnetic waves to propagate through, because waves need a medium. Therefore, ether, it has to exist. वही सेम कंक्लूजन जहाँ पे हम पहुँचे थे अभी. It is not actually a false dichotomy. ट्रू वैक्यूम जो बोल रहे हो वो भी मतलब देयर इज़ नो मीडियम. ट्रू वैक्यूम मतलब एयर भी नहीं है, नो मीडियम. और उसके बाद बोल रहे हो कि नॉन मैनिफेस्टेड मीडियम है. दैट मीन्स कि नो मीडियम ना, कुछ भी नहीं है. नॉन मैनिफेस्टेड मीडियम मतलब क्या? नो मीडियम. सो इफ योर मीडियम इज नॉन मैनिफेस्टेड, इज इट देयर? हैज इट मैनिफेस्टेड येट? अब वही, फिर मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ ना. नॉन मैनिफेस्टेड मीडियम, क्यूई का एग्जाम्पल था नॉन मैनिफेस्टेड पिजियंस. क्यों नो लाइट travels because of non-manifested pigeons. Can you disprove my claim? No. Then I'm right. What I'm saying must be true. अगर आप लॉजिकल फैलेसीज पढ़ रहे हो, बहुत बारी एग्जाम्पल सोचने पड़ते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ का अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा. सो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस फैलेसी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. And finally, Einstein debunked ether. That's what you think. He did away with the ether. It was so important to get rid of the conclusions of Michelson-Morley experiment that the earth is not spinning. So he had to debunk the ether, and the rest is history. डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, फलाना ढिमकाना, सब कुछ हो गया. एंड दैट्स हाउ द कुकी क्रम्बल्ड. बट 1920 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था एक ऐसे है ईथर एंड द थियरी ऑफ रिलेटिविटी. सो जस्ट इन केस एनीवन इज़ डाउटफुल कि ये आइंस्टाइन में भी कोई दूसरे ईथर के बारे में बात कर रहा था, हम फ्लैट अर्थर्स दूसरे ईथर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे अच्छे से देख लो. No propagation of light, luminiferous ether. वही ईथर जिसके बारे में बॉब नोडेल ऑफ ग्लोबबस्टर्स बोलता था कि ईथर इज साइंस. अभी उसका चेला विट्स इट गेट्स इट कम से कम आकर इतना तो बोला है कि नहीं बॉब गलत था. रेस्ट इन पीस बॉब. लेकिन फिर भी विट्स इट कम से कम इतना दम तो रखता है कि बॉब गलत था तो आके बोला कि बॉब गलत था. जेरन गलत था तो वो भी कन्फेस किया कि जेरन गलत था. डेविड वाइस गलत था तो वो भी आके बोला कि हाँ भाई डेविड वाइस भी गलत है. अब बहुत सारी चीज़ें, ईथर, इनकोहेरेंट डाइलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें में विट्सेट खुद भी गलत है. विथ टाइम लेट्स होप कि ट्रेंड तो अच्छा रहा है, ये लड़का गलती मानने से छुपता नहीं है. तो कभी ना कभी इट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ ईगो. जब वो ईगो वगैरह साइड करेगा, एक्चुअली समझेगा पॉइंट, या फिर मे बी प्लेन एंड सिंपल अपने फ़ायदे के लिए उसको समझ में आए कि हाँ यार नेथन ओकली और क्वांटम इरेजर के अगेंस्ट जाके कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग सही बात कर रहे हैं तो उनके साथ सेम बात करना ही सही है. तो मे बी अपना फ़ायदा ही समझ के वो सही आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने लगे. बट या बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ जो ये वेस्टर्न फ्लैट अर्थर्स भी यूज़ करते हैं, वो हम इंडिया, मैंने जितना देखा है इंडिया के फ्लैट अर्थर्स को बस पैरट करते हुए, सोचते नहीं है बहुत ज़्यादा. जब सवाल पूछा जाता है तो इधर उधर की बातें, हवाबाजी, नथिंग ऑफ सब्सटेंस. सो आई एम नॉट गिल्टी इफ आई हैव स्टॉप्ड पेइंग अटेंशन. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन in 1920 said what? We may say that according to the general theory of relativity, space is endowed with physical qualities. In this sense, therefore, there exists an ether.
According to the general theory of relativity, space without ether is unthinkable. For in such space, there not only would be no propagation of light, but also no possibility of existence for standards of space and time, measuring rods and clocks, nor therefore any space-time intervals in the physical sense. समझ रहे हो? उसका स्पेस टाइम कर्वेचर के लिए भी ईथर का होना ज़रूरी था. बट दिस ईथर may not be thought of as endowed with the quality characteristic of ponderable media. लेकिन आप जैसा मीडियम को जानते हो, जो आपके दिमाग में मीडियम का मतलब है, वैसे मत सोचो. As consisting of parts which may be tracked through time, the idea of motion may not be applied to it. तो वो क्या नहीं है, कैसे उसके बारे में नहीं सोचना है, ये सब कुछ आइंस्टाइन ने बताया. बस क्या है ये भी बता देता तो एटलीस्ट लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होता कि आइंस्टाइन ने डिबंक कर दिया. माय गॉड, दिस इज वेरी वेरी फनी, hilarious. So, there exists an ether, and space without ether is unthinkable. One last point before I play Nathan Oakley's video. Electromagnetic waves. ये जो मीडियम ज़रूरी होता है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? अर्थ इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आवर यूनिवर्स इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इस टाइप के भी बहुत सारे फ्लैट अर्थर्स के अच्छे अच्छे वीडियोस देखे होंगे आपने. एंड जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे फ्लैट अर्थर्स के मुंह से मैंने सुना है डायरेक्टली इंडिया के लोगों से यही वाली बात. और मैंने ये सेम पॉइंट अपने पिछले वीडियो में भी बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से दिक्कत क्या है? बस 3 चीज़ें. इट इज़ नॉट अ वेव, इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिक, इट इज़ नॉट मैग्नेटिक. एंड द नेम गिवन टू दिस थिंग वट एवर इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. बेसिकली वो लाइट को रेफ़र कर रहे हैं. लाइट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट frequency, different wavelength. Some of it we can see, some of it we can't. So basically what they are talking about is light. It is not a wave. पता करो कि लाइट का जो वेव्स हम बोलते हैं कि रेड लाइट का इतना फ्रीक्वेंसी होता है, इतना वेवलेंथ होता है, और ब्लू लाइट का इतना फ्रीक्वेंसी होता है, इतना वेवलेंथ होता है, वो कहाँ से मिलता है वेवलेंथ? ये I can give you the answer right now, but that's something that I want to hear from people. फ़िलहाल मैं उस चीज़ का आंसर नहीं दे रहा हूँ. बट वो सारे लोग जो कुछ भी मानते हैं इसके अलावा कि लाइट consists of photon particles, they need to answer this question. Is it a wave? Is it both a wave and a particle? What do you mean when you say this? Yes, that is the mainstream narrative, but वो जो waves बोलते हैं वो wave का कुछ मतलब होता है. It is not a physical wave. That's all the hint that I am going to give you in today's live stream. It is not a physical wave. Then what is it? चलो एक और hint. जो अभी हम बात कर रहे थे, श्रोडिंगर्स कैट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसी से रिलेटेड है. चांस, probability, it is a probably distribution wave function of the particles of light. Now this last thing, go figure. क्या मतलब हुआ इसका? और अपन फ्यूचर में लाइट के और डिटेल्स में घुसेंगे. लाइट का मतलब क्या होता है. बट आज अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में आई सपोज कितना टाइम हो गया है. यस, 1 घंटा हो गया है. एंड जैसा मैंने बोला था कि मे बी
क्वांटम इरेजर का तो लाइव होने वाला था यार इसका अभी तक. यस. ओके. ग्रेट. यही मुझे लग रहा था कि 11:30 है या 12:30 है. ऑल यू लाइव वॉचर्स, जो कि कोई भी नहीं है. कोई दिक्कत नहीं है. मेरा प्लान यही था कि अगर 12:30 से वो होता है तो माई लाइव स्ट्रीम इज़ गोइंग टू गो फॉर अनदर आवर बोनस. लेकिन अगर 11:30 स्टार्ट होता तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई वुड हैव बिड यू गुड बॉय. लेकिन अब तो आराम से प्ले करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नेथन ओकली का. वाह, ग्रेट स्टफ. वेयर आर यू नेथन ओकली? चलो तो अभी इट्स टाइम टू वॉच अ फ्यू वीडियोज़ ऑफ नेथन ओकली. और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक दो बातें कि मैंने अपने चैनल पे जो पिछला लाइव स्ट्रीम किया था उसमें एक बंदे को कवर किया था, करण करके, राइट. वन सेकेंड, लेट मी गेट. तो ये वाला वीडियो पिछला जो लाइव था मेरा, नेथन ओकली इज़ माई फेवरेट. Flat Earthers versus Flat Earthers in Denial, in which I try to contextualize the whole chaos within the community and whether science proves things or not. और वो पार्ट मैंने अपने पिछले बहुत सारे लाइव स्ट्रीम्स में भी और रेगुलर वीडियोस में भी, particularly my previous 2 uploads of 4 hours, Science 101 Part 1 and Part 2, इन दोनों में भी डिस्कस किया था. तो इस वाले वीडियो में आई एम रिव्यूइंग दिस गाय फ्रॉम इंडिया, जिससे पहले भी चाणक्य के चैनल पे मेरी बात हुई है. और उस दिन चाणक्य के साथ चंद्रयान वाले दिन 23 अगस्त को जब साथ में लाइव कर रहे थे तो एज अ फ्लैट अर्थर ऑल्सो ही ज्वाइंड, बट हमारा कुछ पॉइंट्स पे डिसएग्रीमेंट हुआ था. एंड ऑब्वियसली मैं साइंस के पॉइंट पे बात कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, और कोई वहाँ पे आके वो सेम गलती करे तो यू कुड सी द एग्जैस्परेशन ऑन माई फेस. वहाँ पे वीडियो में भी क्लियरली दिख रहा था, लेकिन आई थिंक पॉइंट मैंने उस वीडियो में भी क्लियर कर दिया था विच इज़ कि यू डोंट नो व्हाट साइंस इज़ बिफोर क्लेमिंग साइंस एंड एक्सपेरिमेंट फॉर इन योर फेवर. बट I think, I may be wrong, but I think the same guy ended up in Nathan Oakley's show. He was from India. मैं नेथन ओकली के आफ्टर शोज़ एंड जो आफ्टर शोज़ होते हैं उसमें भी पार्ट रहता हूँ. वो सब कुछ तो स्ट्रीम नहीं होता है, लेकिन उसमें बहुत मजाक उड़ा रहे थे यार उसका. सपोजिडली अ फ्लैट अर्थर. लेकिन that's what you get for blindly following a cult, the Aether cult. Nathan Oakley thoroughly exposed this blind follower of Charon, and like I said, हो सकता है it is the same guy जो कि थोड़ा एक्सेंट बना के इंग्लिश में बात कर रहा था, लेकिन बहुत ही सिमिलर लगा मुझे उसका वॉइस भी और ये भी बात करने का तरीका भी. सो आई डोंट नो. उसका वीडियो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखने वाला हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू या उसकी आवाज़ मुझे सुनानी है बस कि पैरेलली नेथन ओकली के वीडियो और ये वाले वीडियो में भी मैं पैरेलली चलाऊंगा तो मे बी
Audience members can also make a good guess. Is it the same guy? If it is, it will be so interesting to see. So, since I'm a channel member, I get special access to Nathan's videos. So, Jeranism Disciple Embarrassment Part 1 Bobby T. कुछ parts मैं maybe skip कर दूंगा where the guy is being an asshole. Real problem is that you're not playing that video only because I can explain after that. Also, it is short video, less than 40 seconds, right? ये आवाज़ सुनी आपने? अब थोड़ा सा ये वाली आवाज़ सुना? तो हमें कुछ एक ऐसा Maybe I missed that part. होगा एक काम करना होगा जैसे इंडिया वालों को भी कुछ एक ऐसे एक्सपेरिमेंट करके और फिक्स करने होंगे. सेम वॉइस लग रहा है क्या? Right. I'm not going to be told how to produce my show by playing a video. You want to produce your own show. Play it on your crap show with no audience. Meanwhile, you can tell me about the downward bias in gas that's going up. And if you don't, and tell me no, it's about it. यहाँ पे नेथन ओकली जिस चीज़ के लिए उसको स्कूल कर रहा है, इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग जो कि मैं अपने वीडियो में साइंस 101 शामल दुलाई जी के वीडियोस को कवर करते हुए, क्योंकि वो उन्होंने भी अपना एक ग्रंथों से और पुराणों से निकाला था एक्सप्लेनेशन ऑफ संकर्षण, तो वो बस एक बहाना था. ही गेव मी एन एक्सक्यूज़ to properly gather all my points and succinctly try to put them and make my argument. वो करने में 4 घंटे लगे. बट इसमें एग्जैक्टली सेम चीज़ को मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि फ्लैट अर्थर्स जो कि सोचते हैं कि थिंग्स गो डाउन. इस वाले वीडियो में शामल दुलाई का मैंने क्लियरली शो कर दिया था कि एक ग्लोबर का एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई या हीलियम बलून गोज अप और जो एक्सप्लेनेशन एक फ्लैट अर्थर दे रहा है इन वीडियोस में, दे आर द सेम. एक फ्लैट अर्थर बोल रहा है कि वो एक्चुअली हीलियम बलून ऊपर नहीं जा रहा है, उसके चारों ओर का गैस नीचे आ रहा है, इस वजह से बलून ऊपर जा रहा है. एक फ्लैट अर्थर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, मान रहा है ग्लोब अर्थ का एक्सप्लेनेशन कि हाँ ऐसे ही तो होता है, without actually demonstrating it, just by making claims about it, baseless assertions. So, I think it's the same guy. I don't know why I get that feeling. And if that is the case, then bhai Karan, don't say that I did not warn you. I tried to correct you. But then you pointed it out on my ego. उस दिन मैंने बोला कि मेरे वीडियोस जाके देखो, तो तुम्हें लगा कि मैं ईगो दिखा रहा हूँ अपना. No, it wasn't. I make it clear in my previous live कि मैं क्यों करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट्स पे. मैं चाहता हूँ अगर कोई फ्लैट अर्थर का टैग लेके कुछ बोल रहा है, then it should come with some cowbells, some accountability, some justification, some substantiation, some demonstration. वही सारी चीज़ें जो हम एक ग्लोब अर्थर से एक्सपेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोड्यूस करने को. वो सेम स्टैंडर्ड्स आपको अपने ऊपर भी लगाने चाहिए. दैट्स द होल पॉइंट. और अगर आप एक ग्लोब अर्थर को पॉइंट आउट करते हो कि देखो उनके स्टैंडर्ड्स कितने लो हैं, कुछ भी मान लेते हैं, और फिर खुद भी सेम गलती कमिट कर रहे हो, देन एक दूसरे फ्लैट अर्थर का हक बनता है और फ़र्ज़ बनता है कि वो पॉइंट आउट करे कि अरे यू आर कमिटिंग द सेम मिस्टेक दैट यू यूज्ड टू डू एज अ ग्लोब अर्थर.
Get it? Going down, the unbonded gas that's going down causes it to go up. That was your last rebuttal. Now it's play a video. Get lost. Go on Jaren show. Jaren will play your video. If it helps indoctrinate more idiots into believing that there's a downward bias in gas that goes up that you're yet to address 8 times after having it pointed out to you. There's no downward bias in gas that goes up, and the other unbonded particles are making it go up because they're going down. It's absurd. That's your last rebuttal. You've now had it 9 times. I'm not playing your video until you tell me what downward bias there is in gas that goes up. I will debate with you on the video that I just posted in your main chat of Discord. That is a short video, so if you can play, because in your debate in 1943 debate, right? So in that debate you made a clip on me, but the video you was showing, that was not the video I was talking about. That was the same video. I posted that short video just in your main chat right now. Remind us what the argument was about. Yeah, the same argument of downward, why that helium balloon is going in all the directions, that kind of. So you think helium balloons go in all directions? Yeah, because I have the demonstration, and in that short video, if you can play, because what you showed in the clip when you posted that after with the debate with me, you posted another video that I was not talking about. I was talking about that video that I just posted in your main chat, and that's a short video, less than a minute. Do you recall the actual point that I refuted your claim with? Can you repeat back to me how I refuted your claim? Because it matters not what video I used. Yeah, because you think that if there is a downward vector, then the shape should be changed, then the balloon shape should be changed. But it's not like that, because the downward vector force that is putting that balloon, the weight of that air, right? It's very less. It will not distort the shape of the balloon. That is a matter. That is made out of a matter, right? Material. No, elastic material. That was part of my argument. That wasn't my argument. Part of my argument included the idea that you could have the balloon squashed at the bottom. To example, my main point, which was the balloon itself is a container, and the gas inside that container has expanded into its containment, which would be the balloon, equally. In all directions. There is no downward bias for the gas that's pressing up on the top of the balloon, forcing it to expand out and up. The container itself demonstrates the gas is moving in all directions inside the containment of the balloon. Then I exampled, if it wasn't the case, then you'd have a downward bias. You wouldn't have it with gas going up, it would all be going down. But the very fact that there is a pressure on the top of the balloon, well, what's the weight of that gas when it's going up to press up on the balloon and expand it up and outwards? Obviously, there's no downward bias. You can't ascribe a downward bias to a gas particle that's pressed. I hadn't finished. I hadn't finished. What part of I had not finished do you not understand? While I reiterate my point that you failed to paraphrase. Do you think that requires your interruption, New Moon? I want you to try that again without the interruption from you? Makes me think you're not listening, given that you've paraphrased incorrectly back my rebuttal. So I'll try again. There is no downward bias for gas particles that are going up, pressing up on the balloon in its containment, the balloon. Your argument was to take the balloon, a solid, in a vacuum, and ignore the fact that inside that containment of the balloon, the gas is expanded in all directions. Fact. That was my argument. You failed to paraphrase it. Now that you've failed twice and interrupted me, I'd like you to paraphrase back my actual rebuttal to you. That would be that the gas is obviously not subject to a downward bias when it's going up
push the balloon up and out at the top of it? That's not a downward bias. You can't ascribe... Third interruption. You can't ascribe... Third interruption. Third interruption. You cannot ascribe a downward bias to gas that is going up in that containment of the balloon. Can you paraphrase that back to me so I understand that you understand it now? Entropic principle totally addresses my point. No, I'm asking you to paraphrase back my rebuttal to your point that the balloon goes down in a vacuum chamber, but the gas inside the containment of the balloon expands in all directions. You seem to have ignored it. Entropy, and I'm not ignoring it. You are ignoring entropy. Okay, your claim isn't entropy, my friend. Your claim is a downward bias. That's your claim. Your claim is not entropy. Your claim is gravity and a downward bias. Now, if there is a downward bias... Is it just Fundy muting every time I talk from this point forward, Newman? Every time I make my point, you're going to talk through the top of it at the end of it? Is that what's going to happen from here forward, Newman? Okay. Not okay. You are being what's known as an arsehole. That would be to say you're talking through the top of the conclusion of my statement every single time I make one. An acknowledgement of your arsehole behaviour would be nice before we move on, so that you can acknowledge you're being an arsehole and stop doing it. New Moon, I'm requesting for your affirmation that your behaviour, chanting over the top of the conclusion of every statement I make, is arsehole behaviour. Can you acknowledge your arsehole behaviour before we carry on with a reasonable conversation that's not with an arsehole? You. Can you acknowledge your arsehole behaviour so we can move on with this discussion about the gas moving up and... Whether this asshole acknowledges his behavior or not, but people in India have a problem with Nathan Oakley being an asshole in his shows. I hope you got the whole conversation. And who is flailing? Who is making interruptions? Now Nathan Oakley is too disrespectful or too blunt when he does call someone an asshole. For what? For being an asshole? No, you can't do that, Nathan. Too bad. And pressing up that isn't biased downwards in the balloon. You want to acknowledge your arsehole behaviour so we can move forward with the upward moving gas inside the balloon. New Moon. Yeah, that is because of second law of thermodynamics, the law of entropy, where what says that you know that you will know it's based on that. So dispersion, gas expands equally in all directions. Yeah. So if the sky was a vacuum, then the gas we breathe would expand in all directions into the vacuum. We'd all be dead. You were saying? Entropy, yes. So given that there's a law of entropy, gas would expand into the sky vacuum equally, like it expanded into the balloon. This kind of craps all over your idea that there's a downward bias, though, doesn't it? Entropy debunks that notion. But you weren't fighting for entropy, New Moon. You were fighting for the notion that we have a downward bias in the form of gravity. But obviously, if the gas is going up in the balloon, it's not biased downwards. Your explanation for that, entropy. Yeah, entropy would demonstrate that the sky vacuum, outer space, is fake, because the gas we breathe would fill that space, according to you and entropy. The globe model, they have a different kind of excuse for that, and the excuse is like there is a gradient for that. What kind of gradient? So Gradient of what? Gradient of atmospheric gradient. Oh, that's an oxymoron. We don't have sphere-shaped air. That's an oxymoron. It's an oxymoron. Pay attention. Do not talk while I talk. That is an oxymoron. Atmo means air. Sphere means shape. Air isn't in a shape. It takes the shape of its containment. Like it takes the shape of the balloon, or it takes the shape of the vacuum chamber, or it takes the shape of the sky vacuum. That would be to say that we wouldn't have any gas. That would be you interrupting. Is this painful? Is this you displaying asshole behaviour, New Moon? I'd like an apology for your asshole interruption. Go. Yeah, I apologize for that. Yes, fundamentalist religious zealot asshole. I am disseminating how your sky vacuum and outer space is fake. What you are doing is interrupting very rudely while I annihilate outer space, NASA, space travel, trips to the moon, trips to the ISS, trips to Mars. I've destroyed all of it with your own standard that entropy is the explanation for why the gas is going upwards
pressing on the top of the balloon with pressure. You've added to that the globe model, reification fallacy, we don't live on a globe model, explains it by saying we have a gas pressure gradient. Well, that would be first requiring gas to have pressure and press on something like the balloon. Meanwhile, if the actual area of volume it has to contain is space, we would be dead. Gas pressure gradients is a delta of gas pressure. So it need to press on something, and outer space is not something to press on. It would be an area like the balloon that the gas would fill equally when it expands with entropy into space, leaving us dead. My conclusion: outer space is fake, debunked by you with entropy. Thank you for debunking outer space. Oh, why you're thinking that I'm trying to debunk this space? Because I also don't believe in a space. You know that, right? I don't care what you believe in. I'm telling you what you've debunked based on your notions of how gas go down, go boom boom. It doesn't. It expands in all directions. Yeah, I guess expands in all directions, and it's very easy to understand. And Yeah, but your I'm claim not is- saying that the downward vector is a very kind of like, even if it is like what we say a kind of force, or there is some kind of there is some kind of like there is a magnetic like magnets always move to the north, right? So why? It is just because of magnetic field. So there may be some kind of field, some kind of gravitational field that is coming upside down, and every matter is attracting with that kind of field, right? And that field could be anything like a unknown field or a electrostatic field or some kind of other fields, right? I don't know about that, but that exists for real. That's why things goes down. That video was showed on Globebusters. I think Jaren showed that video. समझ में आ रहा है ईथर कैसे रोल प्ले करता है इन दिस होल थिंग? वही सेम जो संकर्षण और गुरुत्वाकर्षण और इनकोहेरेंट डाइलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन, ये सारे पॉइंट्स अल्टीमेटली उनको कहीं से मिल रहे हैं, एंड एट द कोर ऑफ इट इज़ द आइडिया ऑफ देयर बीइंग एन ईथर. सुना ना आपने? इट हैज़ टू एग्जिस्ट. नो, जो भी नेथन कुछ भी बोले उसका जवाब यही होगा, हाँ बट इट हैज़ टू एग्जिस्ट ना. अभी देखा हमने इन द फर्स्ट आवर एंड अ हाफ कि इट्स नॉट जस्ट वन फ्लैट अर्थर, देर आर मैनी. अनफॉर्चुनेटली नेथन में भी अभी जो वीडियोस प्ले कर रहा हूँ उसी में बात करता है, या फिर अदरवाइज़ ये पूरे वीडियो में बात करता है कि हाफ ऑफ फ्लैट अर्थ इज़ ब्रेन वॉश्ड बाय द ईथर कल्ट, by flat earthers like Jeranism and David Weiss and Witsit Gets It and the late Bob Nodell of Globebusters. So, Nathan Oakley said कि it's 50% of the flat earthers. Unfortunately, here in India, my guess would be 90%, if not more than that. Most of the people parrot the same things that their ether priests parrot in their own channels. And Sorry. I put that. Let me know when you're done. What? Yeah, I'm waiting for I thought get a that word in Jaren edgeways, was going- because you base this entire babble on there being a downward bias. For real, that's why things goes down. I said when there's a downward bias. So I was going to interject and ask you, what downward bias would that be when detailing the gas that's pressing up on the balloon in your example? Tell me about the downward bias you're assuming for that gas particle, please. Yeah, if you play that video, that's why I came with I didn't an ask evidence for with you the- to demand what I do when I produce my show. I asked you a simple question about something you inferred when you described something that Globebusters and their nonsense shite with ether and electrostatic forces and ether and background bollocks. All that crap that you spurted was based on the premise that there's a downward bias. No. Don't interrupt No, me. I said- Excuse me, asshole. Don't interrupt me.
while I take apart the base premise that you started your nonsense waffle with about electrostatic forces that you may or may not know are there. I urge you, babble on based on the pretense that we've got a downward bias. Now, I'm redressing what you said based on the very first statement that we've got a downward bias. The downward vector is for real. That's why things goes down. Very first statement that we've got a downward bias that I've already debunked. And I'm going to ask you, based on the debunking I've already employed, about a particular set of gas particles that are pressing upwards on the balloon in your example. It requires you to answer me about the downward bias you infer in the gas in the balloon that is going up. Go. One second, thankfully I unmuted myself. So यहाँ पे इसके पास तो कोई जवाब नहीं ही होगा, बट जो बात हम कर रहे थे, आई फॉरगॉट व्हाइल अनम्यूटिंग. हाँ, सो श्यामल दुलाई के साथ कॉन्वर्सेशन में हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे थे रिगार्डिंग दिस बलून इनसाइड अ वैक्यूम चेम्बर, कि व्हेन यू इंट्रोड्यूस some gas inside a vacuum chamber, let's forget about this balloon, let's just say there is an inlet pipe through which you can introduce a gas. You create a vacuum inside this container and then you introduce a little bit of helium gas inside that container. To these cult members who are trying to incorporate their own idea of gravity by hijacking the concept of ether, or rather by hijacking entropy, what New Moon is trying to do right now, but actually they're promulgating the idea of ether, the underground medium, the underlying medium, background medium, right? The reason being, like I said, as always, it has to exist. It requires you to answer me about the downward bias you infer. मेन पॉइंट जो मैं बोल रहा था वो है कि इन अ कंटेनर श्यामल दुलाई गॉट टू द पॉइंट ऑफ क्लेमिंग कि उस कंटेनर के अंदर जब आप चेक करोगे तो हीलियम बलून नीचे ज़्यादा होगा और ऊपर कम होगा. दैट वायोलेट्स एंट्रोपी लॉ, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, वही सेम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो हम यूज़ करते हैं ग्लोब मॉडल के आउटर स्पेस के क्लेम को फेक करने के लिए, डिबंक करने के लिए, कि वो जो क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर हमारे चारों ओर हम सांस ले रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज़ गैस प्रेशर, एंड व्हेन यू गो आउट एंड लुक अप इनटू द स्काई एंड सी स्टार्स, अकॉर्डिंग टू द हीलियोसेंट्रिक मॉडल, वो स्टार्स एक वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रहे हैं. नाउ इज देयर अ solid barrier or any kind of a barrier between you and that star, stopping the air around you to escaping into the available space? ग्रेविटी वो बोल सकते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ग्रेविटी क्या होता है, उसके बारे में तो बात कर रही थी. लेकिन यू सी दिस सर्कुलर रीजनिंग, कुछ चीज़ है जिसके वजह से गैस अट्रैक्ट होके रह रहा है एटमॉस्फेयर में, और सिंस गैस अट्रैक्ट होके रह रहा है तो गैस भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है. आपको बस मानना पड़ेगा कि एक कंटेनर में जब हमने वैक्यूम बनाया तो इवन विद इन दैट कंटेनर दीज फ्लैट अर्थर्स हु हैव लर्नड इट फ्रॉम बॉब, I was years ago, I was also a part of such conversations, obviously not from Bob's side, but listening to those conversations ki yes, there are flat earthers who actually claim that there is going to be a gradient of helium gas inside a container which is vacuum. क्या प्रूफ है इसका? Is there any demonstration? No. और इसी पॉइंट पे मेरा वो वाला
श्यामल दुलाई के साथ वीडियो मैं इसी पॉइंट पे ख़त्म करता हूँ. इवन माई कॉन्वर्सेशन इन द व्हाट्सएप ग्रुप, उसके आगे वो बात तो बहुत करना चाहेंगे इधर उधर की, मुझे नहीं करना ना. मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि ये प्रूव करके दिखाओ कि उस कंटेनर के अंदर सीरियसली श्यामल दुलाई सेड कि अगर आप ऊपर में अपना गेज लगा के प्रेशर चेक करोगे तो कम आएगा, और इसी कंटेनर के नीचे प्रेशर चेक करोगे तो ज़्यादा आएगा. क्या कर सकते हैं इस चीज़ का, ऐसे आइडियाज़ का? उसको बोलना था, उसने बोल दिया. क्या उससे वो सही प्रूव हो गया? क्या उसने खुद कुछ भी किया प्रूव करने के लिए? नहीं, बस बोल दिया ऐसा होता है, तुम प्रूव करो कि गलत है. कैसे गलत प्रूव करेंगे? क्योंकि हमारे पास एक नेचुरल लॉ है, एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. PV इज इक्वल टू nRT. गैस लॉज होते हैं कि विद इन दैट कंटेनर सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स collide with other gas molecules and with the walls of the container. What is the definition of pressure? Gas pressure. The force exerted by the gas molecules on the walls of the container. सालों से बॉलबस्टर्स गैंग ये सिंपल आर्ग्यूमेंट से ग्लोब मॉडल को डिस्ट्रॉय करता आ रहा है. कितने ग्लोब अर्थर्स आए, इस चीज़ को अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट उनका आर्ग्यूमेंट शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है. बिकॉज नो वन कैन डेमोन्स्ट्रेट अ वायोलेशन ऑफ अ नेचुरल लॉ. इफ दे कुड, इट वुडंट बी अ नेचुरल लॉ. मिसनोमर है लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को साइंटिफिक लॉ बोलना. चलो, साइंस अगर बोल रहे हो, साइंस बुक्स में हम पढ़ते हैं क्योंकि इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, लेकिन फिर भी these are descriptions. Laws are descriptions of things that we always observe in nature. A scientific theory is different. The scientific method is different. But यहाँ पे हम जब law की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया scientific law is a misnomer, actually natural law बोलना चाहिए. तो natural laws are descriptions of things which always happen in nature. They can be of mathematical form or representational form, but it is just a description, not an explanation. Does not give you answer to cause and effect relationships, how or why questions. बहुत बारी रिपीट किया मैंने अपने वीडियोस में. This is the basics of science. Science 101. In the gas in the balloon that is going up. Go. Yeah. I need you to answer about the downward bias that obviously isn't there in gas particles going up. But for your shite you got from Globusters to work, we must infer a downward bias. For real, that's why things goes down. There isn't one in the gas going up, and you are ignoring my question. So, fourth time. Do you not know how this show works? When you entirely ignore my point that refutes yours and try and fundamentalist zealot mute me by You chanting also through ignore me my like video, you're right? doing now, it won't fly. I will repeat it until you shut your mouth and close your line and listen. And until you do that, every time people in the show see your light flashing while I'm talking, they know you're not listening. So I'll repeat it again, hopefully without the asshole religious zealot chanting through it. What, based on your prerequisite of a downward bias for Globusters garbage to make sense, what is the downward bias in the gas pressing up on the balloon in your example? Go. Yeah. The biggest question here is that why you're not playing. You're not asking me a new question. You're not going to tell me what the biggest question is. You're going to answer mine about the obviously non-existent downward bias in a gas particle that isn't going down. But you can't admit that
because you really want Bob's bullshit to be true. You want Jaren, who you mentioned specifically with reference to Aether, and his bullshit to be true. It isn't, and when we get to the prerequisite downward bias you need, you can't answer a question about gas that goes up in your example, because obviously it's not going down to have a downward bias, it's going up. So I'll ask a sixth time. What downward bias, pray tell? Oh, Fundy, mute time when the question comes. Fundy, mute, asshole. Did you detect that I was going to be asking you a question about gas that's going up and how much downward bias it's got? Yeah, it was. Yeah. Okay, I'm telling that. First of all, that Jaren didn't told that, and I didn't ask about Jaren. I asked how much downward bias there is in a gas particle that is going up. I referenced the garbage you want to be true because you can't answer, so a seventh rendition. What downward bias in the gas that's going up? gas is going down in that way. Sorry, I don't need to be told about the gas that's going down to make Bob and Jaren and Witsit shite make sense, when my question specifically is about the gas that's going up, New Moon. Is it that your indoctrination at the cult and hands of Jaren and Witsit now requires you to fundamentally mute me while I talk about the cult of Aether and how you've been duped, and now insist on talking about the gas that is going down when asked about gas that's going up? Yeah, but it's because of buoyancy first, right? You also believe that it is, and it is a result of downward vector and some kind of. Right, the up in the gas is a result of the downward vector. So the gas that's going down, that's unbonded to the other gas, completely unbonded, is making it go up. So it's going up because of the downward bias. Are you insane? Yeah, because other gases are like more dense. That's why they are putting pressure from below, and that's why the helium that is less dense and it's going up. Thank you. When it gets to the bits that devastate, it's downward. Isn't it almost like listening to a globe earther explain how the atmosphere can stick to the outer surface of a spinning ball? They give pretty much the same reason. And I point it out with Shamal Dolai also. एकदम ऐसा लगता है कि कोई ग्लोब अर्थर से आपने पूछ लिया और वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अरे एक्चुअली चारों ओर का जो एयर है वो नीचे जाता है, तब इसलिए हीलियम बलून ऊपर जाता है. दिस इज रियल ब्रेन वॉशिंग, जेडाई माइंड ट्रिक. कि फ्लैट अर्थर्स, सपोजिडली क्रिटिकल थिंकर्स को भी कितना इजी है ट्रिक कर देना अपने वेग आर्ग्यूमेंट्स के साथ, with your sophistry, with your rhetoric, with your flair and the numbers that you got on your channel. ये सब चीज़ें अगर हो आपके पास but no real substance, still you will have takers. Shame on people who fall for it even after becoming a flat earther. Bias and Aether. There's no downward bias in gas going up. Now, you asserting that unbonded gas particles moving in the opposite direction have influence on unbonded gas particles that are moving up. You are incorrect. But the real problem is that you're not playing that video only, because I can explain after that. Also, it is short video, less than 40 seconds, right? I'm not going to be told how to produce my show by playing a video you want. Piss off and produce your own show. Play it on your crap show with no audience. Meanwhile, you can tell me about the downward bias in gas that's going up. And if you don't, and tell me no, it's about it going down, the unbonded gas that's going down causes it to go up. That was your last rebuttal. Now it's play a video. Get lost. Go on Jaren's show. Jaren will play your video if it helps indoctrinate more idiots into believing that there's a downward bias in gas that goes up that you're yet to address 8 times after having it pointed out to you. There's no downward bias in gas that goes up, and the other unbonded particles aren't making it go up because they're going down. It's absurd. That's your last rebuttal. You've now had it 9 times.
I'm not playing your video until you tell me what downward bias there is in gas that goes up. Go. 10 times. Yeah, the gas is going up. That is because of buoyancy, because of other And that's gases. why right? I said what downward bias is there. I didn't say why is the gas going up. I said what downward bias is there in the gas, given that your prerequisite for your garbage cult-like crap that came from Globebusters, that cult-like crap requires us to pre-assume that everything has got a downward bias. Okay, if I'm going to assume everything's got a downward bias, you can explain the downward bias in the gas that goes up. Ladies and gentlemen, there isn't one! If that isn't bloody obvious by now, I don't know what is. If it also isn't obvious how unbelievably indoctrinated Bob and his Globebusters cronies are, I don't know what else is. This is how indoctrinated you are with Aether. You'll deny the very premise of gas going up and insist that it's actually going down. Idiots! Let's hear it one more time, because the last few sentences was the whole conclusion, and I have repeated it a number of times. This is how indoctrinated you are with Aether. It's obvious how unbelievably indoctrinated Bob and his Globebusters cronies are. I don't know what else is. This is how indoctrinated you are with Aether. You'll deny the very premise of gas going up and insist that it's actually going down. Idiots! Part 2. I hope Nathan does not mind कि being a channel member I'm playing these videos which are only meant for members, but I'm sure he will not mind. Love you, Nathan. Right, as Even it if we is, can't but prove then, Ether, can't disprove but it. then, All right, so you can't disprove something in science. Do you understand, given I've just given you a breakdown of how the empirical method of hypothesis construction can only facilitate one wrong and one right outcome, proving one thing, alternative hypothesis, disproving the other, null hypothesis, that would make you wrong when you say science can't disprove? Do you understand how you were wrong, New Moon? Yeah, I understood that, yes. Excellent. Please paraphrase back what I explained to be hypothesis actualization to my audience. Go ahead. Right? Like if we have two hypotheses and if we proved one according to you, then we disproved other, right? Yeah, but you talked it about Jaren with Jaren. You have a good knowledge. I'm not saying that you don't know. It's like a clearing out of the dead wood, all this. These Wixits and Gerrans and everything else. We're clearing the dead wood out now. This is what it's all about. Just going to be us in the end. that's how you prevent the fires, man. We've seen videos of the helium balloon with extra, when they take the pressure out of the vacuum chamber, it pops. Where does the gas go? It fills the chamber. We've all seen that. They've seen that. And look at this guy fighting what he's seen. Totally ignoring everything Nathan said. Just wants to get to that video. They want their Ether. Well, that's my point. But where is the video of the gas? Hang on, Chuck. They could see it all happening, but because Ether must live, they got to deny what they saw. That's correct. Seems like you think this guy was smart enough to get us to segue away from the video on celestial navigation today? Because it's a shame we're not going to be able to cover it. You can't divine the guy's motivation. He just wants his Ether to be true. He's a cult member. He's the cult being attacked. Now he wants to defend the cult. Nathan, you got me very nervous, Nathan. Pardon? I thought you were gonna have a heart attack. Because it's infuriating. He was already wild Even if tonight, we can't, right, as even it if we is, can't but prove then, Ether, can't disprove but it. then, All right, so you can't disprove something in science. Oh, wow. That's why dark matter and dark energy exist. Oh, he's still alive! Look at this, he's still alive! Okay. Yes, you can disprove things in science. You can only
prove your alternative and disprove your null, or prove your null and We are not disprove. disproving There's dark that energy and asshole dark matter. interruption. There's that asshole interruption. So I'm disagreeing with you and giving an example of how you're wrong, and you're interrupting the conclusion of it because you're an ether believing cult member asshole. So let's try that again, asshole. Do you want to say I'm an asshole and I keep interrupting things that disagree with my ether belief? Do you want to say that before we move on with a reasonable discussion where an asshole doesn't interrupt the conclusion that makes him wrong? Your statement, don't need any affirmation from me, I'll do it without, was that you can't disprove things with science. You can only prove your alternative and simultaneously disprove your null, or prove your null simultaneously disproving your alternative. Those are the only outcomes from science. So while you say, no, you can't disprove things. सो अपने पिछले वीडियो में भी एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मैं बात करता हूँ. उस वीडियो का टाइटल ही था डज साइंस प्रूव एनीथिंग, एंड आई कवर द डिबेट बिटवीन नेथन एंड जेरन ऑन दिस वेरी टॉपिक. जेरन, who thinks कि science doesn't prove anything, Jaren, who thinks that science doesn't prove anything, is ultimately being schooled by Nathan in that 3-hour long video debate. And this is not the first time, बहुत बारी पहले भी हुआ है. सेम पॉइंट बताने की कोशिश की गई है जब वो क्लेम करते हैं कि ईथर इज़ साइंस, ईथर इज़ दिस, ईथर इज़ दैट, एंड ग्रेविटी इज़ एक्चुअली इनकोहेरेंट डाइलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. बताया ना कि दीज वर्ड्स डू नॉट मैटर, कुछ भी फेंक दो, क्योंकि लोग अभी अभी ग्रेविटी के ब्रेन वॉशिंग से निकले हैं ना, तो वो ढूंढ रहे हैं कि अरे ग्रेविटी नहीं तो क्या, तो डूबते को तिनके का सहारा. कुछ भी बक दो उनके सामने, यार ग्रेविटी पता है एक्चुअली ऐसे होता है, तो अच्छा ऐसे होता है, वाह यार अच्छा आइडिया, यस, साउंड्स कूल, साउंड्स इंटरेस्टिंग. फ्लैट अर्थर्स तो एक्सप्लोर ही करते हैं ना नई नई चीज़ें. दिस साउंड्स न्यू, लेट अस एक्सप्लोर. दैट्स द मेंटालिटी. That's all you get from the end result. One thing disproven, A causing B, and one thing proven, A not causing B. One can only be true, and one will be disproven upon experimentation, making you, New Moon, scientifically illiterate and stupid and wrong. So, do you understand, given I've just given you a breakdown of how the empirical method of hypothesis construction can only facilitate one wrong and one right outcome, proving one thing, alternative hypothesis, disproving the other, null hypothesis, that would make you wrong when you say science can't disprove? Do you understand how you were wrong, New Moon? I told you, like, these kind of things are still to be proven or disproven, but I don't think so that someone can do that. But still, I've like, just explained how you do that with a validation of a hypothesis that only has an outcome where you prove one thing and disprove the other. I just explained it to you. Can you paraphrase back what I explained to you during silence while you were presumably listening, or was what I explained to you with the only outcome? Is that asshole again? Is that that's asshole, right? Asshole. That's asshole. Asshole, right? Asshole confirmed that you still can't prove things with science after an explanation of exactly how you prove things. Asshole starts interrupting. So, asshole, can you paraphrase back how I explicitly detailed how the outcome of experimentation, that's hypothesis actualization, can only result in something being disproven and something being proven? That's the only outcome in every single experiment ever. Do you understand? Don't just reaffirm your position that I've just overcome.
Do you Yeah, understand? that's, Do you understand? Because if you say yes, I'm going to get you to paraphrase it back. If you say no, I'm going to repeat it differently. no, but you So repeated. no, you don't understand how science proves and disproves things. I don't need a waffle after your no. So just to affirm, you don't understand how science proves and disproves. You don't understand that. With scientific method, are you talking about that? Do you not understand a simple closed yes or no question? I've just explained hypothesis actualization to you. Do you understand what I explained? Yes or no? Yeah, I understood that. Yes. Excellent. Please paraphrase back what I explained to be hypothesis actualization to my audience. Go ahead. Yeah, when we like make a hypothesis, then at that time we think that we are going to prove something or disprove something, and if we prove this thing, then we are disproving the things that are not proven, right? So smart. Then we are disproving things which are not proven, right? So it is making that kind of right. Like if we have two hypotheses and if we proved one according to you, then we disproved other, right? That is, I think, the simpler way to tell. But yeah, what you talked it about Jaren with Jaren in. Sorry, I don't want to move on to Jaren. I want you to understand that when you said it can't disprove things, but you've just summarised my point about how it disproves things, that you now understand how bloody wrong you were. Let's not talk about your cult leader. Let's talk about you, the subservient cult cut, and how he was wrong about what Jaren told him when Jaren said science doesn't prove, and you parroted that incorrect here, and have now paraphrased back exactly how it disproves things. So you understand how wrong you were, New Moon. That's what I need from you. No, don't be a weasel. No. Yeah, it's not a call. No. I'm not asking you to affirm how much of a cult Jaren's group and Globebuster's group and Witsit's group is. I asked you to affirm how wrong you now understand to be, based on your statement that science doesn't disprove things, and then paraphrasing back exactly how it disproves things, based on it can only have one or other outcome, one of which is disproving something. You affirmed, paraphrased it back accurately. Now you just need to concede that you were wrong when you said the polar opposite of that, based on the shite you got from Jaren, who's an idiot. So don't focus on Jaren, focus on how you, the cult subservient, were wrong when you said science doesn't disprove. Don't be an asshole and chant through the conclusion about what you now need to do. That would be affirm how wrong you were with your original statement I've challenged. And you paraphrase back how wrong you were, so you just need to affirm, yeah, I was wrong about that when I said science can't disprove. The big problem with your... I don't want to hear the problem, I want to hear the understanding that you were wrong when you said science doesn't disprove, given that you've just explained, by paraphrasing back what I corrected you with, how it disproves. You need to affirm how wrong you were. Go. No, you were also wrong about... No. You either affirm how wrong you were, because it's blatantly obvious to everybody watching, given that you've paraphrased back exactly how it disproves things. If you will not and refuse to admit that you were wrong, then you are a weasel. And we'll have a good laugh at you, being a weasel, not being able to admit when you're wrong, having no humility, chanting through the end so you don't have to exercise that humility you don't have. We'll just call you a weasel if you can't affirm that when you said it doesn't disprove things and can't, given that you've explained to us with your own tongue how it does, that you'd admit you were wrong. Unless you're a total weasel. We'll see. Nathan, you have a good knowledge. I'm not saying that you don't know. You have a good... Yeah, I don't need you to tell me whether or not good knowledge. Part 2 done. Now the last part, part 3. Then I will give a very, very concise summary of what this is leading to. This cult within the flat earth community, so to say. Part 3 is the newest one. Navigation. So आप देख रहे हो एक फ्लैट अर्थर का डिसाइपल, फैन बॉय, people also call me Nathan Oakley fanboy,
and I wear that badge of honor, wear that label as a badge of honor. Still, ये try to understand the gravity of this situation, pun intended, कि flat earth cult leaders are producing a variety of flat earthers. Unfortunately, there are many in India who promulgate whatever they have learned from their priests, Aether cult high priests, and then put such arguments in front of flat earthers from the globe earther side. न्यू मून यहाँ पे नेथन ओकली से डिबेट कर रहा था बाय बीइंग वन ऑफ अ ग्लोब अर्थर कि गैसेस डू हैव अ डाउनवर्ड वेक्टर. नेथन ओकली ग्लोब अर्थर्स को जैसा यहाँ पे न्यू मून के साथ वो एटीट्यूड शो कर रहा था, वैसा ही ग्लोब अर्थर्स को भी अपने पॉइंट्स बोलने का मौका मिलता है. और जब वो बोलते हैं कि नहीं गैस मॉलिक्यूल्स हैव अ डाउनवर्ड वेक्टर, तो फिर उनकी क्लास लगाता है कि ग्लोब अर्थर यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ग्रेविटी इज स्यूडो साइंस. और अगर आपको फ्लैट अर्थ सर्कल्स के बारे में थोड़ा भी पता है तो ज़रा पूछिएगा कि नेथन ओकली कौन है. ठीक है, सबको पता होगा कि ये कौन है. एंड इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आपको एंटी नेथन ओकली मिल जाएंगे विथ आर्ग्यूमेंट्स लाइक ही शाउट्स अ लॉट, ही इज़ टू लाउड इन हिज वीडियोज़. बहुत गाली गलौज होती है उनके शोज़ में. आर्ग्यूमेंट्स की बात कोई नहीं करता सुना है मेरे को आजकल. फ्लैट अर्थ आर्ग्यूमेंट्स की बात आती है तो सेलेस्टियल नेविगेशन, जो कि ये फ्लैट अर्थ डिबेट पैनल एंड बॉलबस्टर्स गैंग, क्वांटम इरेजर, नेथन ओकली, ऑल दीज गाइज, ये लोगों ने ब्लैक स्वान आर्ग्यूमेंट, सेलेस्टियल नेविगेशन का आर्ग्यूमेंट, द बेस्ट फ्लैट अर्थ प्रूव्स. एनी फ्लैट अर्थर वर्थ हिज मेटल नोज कि ये सारे पॉइंट्स कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं. और जस्ट दीज पॉइंट्स डिस्ट्रॉय द ग्लोब. इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है. बार बार मैंने बताया है, globeterminator.com क्वांटम इरेजर का वेबसाइट. नेथन ओकली के सारे शोज़, लाइव शोज़ ज्वाइन करो, बी अ चैनल मेंबर लाइक आई एम, एंड उसके लाइव शोज़ में जाके डायरेक्टली ज्वाइन करो, बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन. इफ़ यू हैव एनी जेन्युइन क्वेश्चंस that you are struggling to find an answer to, go and join his live streams, ask away. सारे weekdays पे, every single day religiously for the past 5 years or so, 2000 episodes उसने प्रोड्यूस किए हैं. It's not worthless. It is a gold mine. Quantum Eraser का channel is a gold mine for flat earthers who actually want to learn something, learn some good arguments, learn some debate skills. ना कि मॉडर्न डे डिबेट देख के इम्प्रेस हो गए, जहाँ पे शुरू में 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का स्पीकर्स को अपना जो फेरी टेल है वो सुनाने का मौका मिलता है कि देखो मेरे हिसाब से दुनिया ऐसी है, और उसके बाद फिर डिबेट पे आते हैं हम. दैट्स नॉट अ डिबेट. डिबेट मतलब एक पॉइंट पे डिबेट कर रहे हैं ना, कोई उस पॉइंट के फॉर में, कोई उस पॉइंट के अगेंस्ट में, और हम डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन पे आते हैं. सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो. जब ख़त्म हो जाएगा तब लंबी खामोशी. और ऐसा कई बारी नेथन के फ्लैट अर्थ डिबेट में, क्वांटम इरेजर अपने चैनल पे,
जाके एक्चुअल ग्लोब अर्थर्स के साथ डिबेट्स देखो, हाई लेवल इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, नॉट द वंस जो कि जेरन और विटसेट करते हैं मॉडर्न डे डिबेट पे और अपने चैनल्स पे। भले ही वो पीएचडी स्कॉलर्स को बैठा के बात कर रहे हैं, लेकिन अपने मुंह से जो बात बोल रहे हैं उनका तो उनको पता ही नहीं है ना। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ क्लियर एज इट कैन बी, क्रिस्टल क्लियर आफ्टर दिस होल डिबेकल बिटवीन नेथन एंड जेरन, दिस वन ऑन वन डिबेट। उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई तुम साइंस को ही डंप कर रहे हो और फिर अपने आप को बहुत महान बता रहे हो कि मैं साइंस के प्रोफेसर से जाके बात करता हूँ। क्यों भाई साइंस को इतना इम्पोर्टेंस है? इफ़ साइंस इज़ वर्थलेस, इट कांट प्रूव एनीथिंग। दे हैव मैनी वेज ऑफ weaseling their way out of this sticky situation, but yeah, doesn't take a rocket scientist so to say to figure it out कि वो लोग क्या बकवास कर रहे हैं और कैसे अपने कल्ट मेंबर्स को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सो बताया एक आर्ग्यूमेंट जो था ग्रेविटी वाला कि अब फ्लैट अर्थर्स ये लेके आते हैं कि नहीं, गैस मॉलिक्यूल्स डू गो डाउन, थिंग्स डू गो डाउन, देयर इज़ अ puddle of helium inside a vacuum chamber, not that helium gas spreads all across the chamber and occupies all the available space. We know that is gas behavior. लेकिन नहीं, ग्रेविटी का रिप्लेसमेंट जो चाहिए, तो इसीलिए ग्रेविटी वाले अगर बोलते हैं कि भाई हाँ भाई ग्रेविटी तो उस चेम्बर के अंदर भी काम करेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे, उन ग्लोब अर्थर्स के बेवकूफ़ी को पॉइंट आउट करने के बजाय ये फ्लैट अर्थर्स उनके साथ हो लिए हैं। इफ़ यू कांट डिफीट देम साइड विद देम, सो सिंपल। फकटार्ड्स। वैसा ही एक और नेथन ओकली एंड गैंग का जो सेलेस्टियल नेविगेशन का पॉइंट मैं चाणक्य तिवारी के चैनल पे भी शॉर्ट में समझा के आया था कि भाई फ्लैट अर्थ का कोई प्रूफ मांगे तो बात को इधर उधर पलटते नहीं हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ भाई सेलेस्टियल नेविगेशन के बारे में सुना है। सेलेस्टियल नेविगेशन बहुत ज़्यादा भारी भरकम अगर हो जाता है आपके लिए, देन एंगल मेजरमेंट तो समझते होगे। Do not even talk about celestial navigation. Just talk about elevation angles of any celestial object. Star, sun, moon, कोई भी चीज़ का elevation angle, altitude, height जो हम मेज़र करते हैं वो किलोमीटर्स में नहीं होता है, वो डिस्टेंस नहीं होता है, वो क्या होता है? वो एक एंगल होता है। पूरा का पूरा ग्लोब मॉडल comes from measurement of angles to the stars. Our latitudes come from the same angle measurements to Polaris. All these things are based on flat earth calculations. You know why? Because angles, जो स्टार का आप एंगल मेजर कर रहे हो, जो कि नेथन ओकली अपने डायग्राम्स में भी बार बार शो करता है इन द वीडियो दैट आई एम गोइंग टू प्ले, दोज एंगल्स कैन ओनली बी मेजर्ड with a flat baseline. It doesn't work on a globe unless you are a part of, a member of the Aether cult. Because then, just because your Aether priest, Jaren, tells you when he debates anti-flat earthers like Fight the Flat Earther and claiming that, see, we can have such cordial conversations, amicable exchange, even when we disagree in our worldviews. So Fight the Flat Earth के साथ जेरन डिबेट करने जाता है फ्लैट अर्थ के साइड से, और जब सामने से फाइट द फ्लैट अर्थ बोलता है कि हाँ बट एलिवेशन एंगल्स एंड सेलेस्टियल नेविगेशन
वर्क्स फाइन ऑन अ ग्लोब, तो जैरन मान लेता है कि हाँ हाँ आई एग्री इट कैन वर्क ऑन अ ग्लोब, और फिर अपने कल्ट मेंबर्स को, फॉलोअर्स को यही चीज़ बोलता है कि अरे भाई ये नेथन ओकली जैसे फ्लैट अर्थर्स जो बोलते हैं ना कि इट कैन नॉट वर्क ऑन अ ग्लोब, वो लोग स्कैमर्स हैं, वो लोग कुछ भी बोलते हैं. दिस इज़ द फ्लैट अर्थर with the highest number of YouTube subscribers. Jeranism. Unsubscribe to him. एक टाइम पे मैं भी देखता था, जब तक वो ISS की बातें कर रहे हैं, देखो ISS फ्रॉड दिखा रहा है, नासा के फ़ोटोज़ में ग्लिचेस हैं, वीडियोज़ में ISS फुटेज में ग्लिचेस हैं, स्ट्रिंग्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, रॉकेट्स कैसे इमेज फेक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ही उनको करनी चाहिए. बड़ी बड़ी बातें नहीं कि साइंस, ईथर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर इन सब चीज़ों से दूर रहो ना, करो अपनी बकवास. बहुत टेकर्स हैं, ये तो ऑब्वियस है ना कि ज़्यादा लोगों को यही देखना है ISS में कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं. मैं भी देखता था एक टाइम पे, कितना देखोगे यार, हो जाता है ना एक पॉइंट के बाद तो ख़त्म हो जाता है, पता चल जाता है. यहाँ बहुत तरीके हैं, समटाइम्स इट इज़ ऑब्वियस, समटाइम्स जब वो बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं डज़ नॉट मीन कि वो स्पेस में एक्चुअली है ना, क्योंकि दैट्स इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. इट ओनली मीन्स कि वो अच्छा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उनका टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गया है, CGI इम्प्रूव हो गया है, रियल लाइफ वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर देते हैं वो, राइट. लेकिन अगर एक्चुअली इंटेलेक्चुअल लेवल पे, साइंस के लेवल पे बात कर रहे हैं, गुड आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, देन दिस इज़ द प्लेस टू बी. नेथन ओकली एंड द बॉल बस्टर्स गैंग. एंड बॉल बस्टर्स के जो सैटरडे इवनिंग एपिसोड्स होते हैं वो अभी 12:30 को स्टार्ट होने वाला है. मेरे यहाँ पे इंडिया में रात के 12:30 बज गए हैं, बट मैंने 10 बजे अराउंड स्टार्ट किया था, तो 2.5 घंटे का, 2 घंटे से ज़्यादा का तो हो ही गया है. तो ये लास्ट वीडियो प्ले करके आई एम गोइंग टू जॉइन देम इन देयर live stream, and it's going to be a long night. Chalo, one last video. Nathan Oakley part 3. पहला था part 1, Jeranism disciple. एक सेकेंड, Jeranism disciple embarrassment, then Jeranism disciple humiliation. पहले ग्रेविटी के बारे में बात करता है, फिर वो प्रूव करता है, जैसे कि उसने मेरे भी जो वीडियो मैंने बनाया था 23 अगस्त को भी उसने प्रूव किया था कि साइंस के बारे में उसको कुछ नहीं पता है. ही डज़ नॉट नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, ही इज़ टॉकिंग आउट ऑफ हिज आर्स. है कारण, ग्लोब बस्टर, न्यू मून, जो भी नाम है तुम्हारा, here's a piece of advice. Get your head out of your ass. But why you run away in middle? Because Because it's hang on, New Moon, is that you have to Yes. you have to buy into you have to buy into science doesn't prove anything to push the ether, and you're being used like a little puppet by Jared, and you're not thinking for yourself. Oh, go to Google, search the science proof things. That's the standard Jared is using so that he could keep his ether alive that he associates and disassociates with whenever it's convenient. no, Jaren never Yeah, he said- propagates ether. Sorry, I'm Never, sorry. Why are you but telling he- us what Jaren does? Are you his representative? No, because he that Then don't mention his name again.
I'll reference the conversation I had with Jaren personally. That's what I will do, because I've had a personal conversation with him and have a personal relationship with him. You, on the other hand, are some shithead cult follower. You've got no reason to tell me what Jaren thinks or says or does. I don't give a shit what you say about Jaren. Me, on the other hand, I've spoken to him. Are you Yeah, like so his why you was greasy not lawyer or speaking to him something? Yeah, he about thinks the he's his tangent representative. lines? He's not. Like you can do celestial navigation on globe also. Why you was not talking about that? You run away in the middle of the conversation because he was trying to bring up that using a tangent line you can do celestial navigation on the Oh globe, my and you run away. God! You see how Okay, much? that's it. No, You everyone. see how much Thank they you for the colour infiltrated? commentary. You want to explain to us, given that you are a quote-unquote flat earther, how much credence you have given to Jaren's claim that you, a flat earther, can do celestial navigation on a globe. I'd like you to now explain how you can. Go ahead. Yeah, I do geometry myself, not because of Jaren. And you can use a tangent line, and with that tangent line angle, like on a flat Earth, what we say, what we do, we assume that the Earth is flat with a tangent line, and you can assume on a globe that a tangent line. You can assume a tangent line, right? According to the GP is 90, and then the tangent line, right? It's perfect horizontal, so it will work the same way. And the Stop celestial 1 second, navigation please. on the Stop 1 globe second. is also wrapped. Thank you. One step at a time. Okay, I understand. I'll paraphrase back what you have said. You take a tangent from a globe. I got that bit. Then you said that you have 90 degrees GP at the tangent on a globe. Correct? That's what we've got so far. Just need a yes. Just checking I've understood so far. Carry on. Yes. That's what we got so far. Really, what does GP stand for? GP is like directly below point of the star or whatever we are. What does it stand for? Was my Right. question. GP, it's the I think globe point that is directly below that thing we are right. He said, Like I it's don't the need help. What a I jerk. heard what he said. But you it's believe 90 it's the... degree angle like GP. Sorry, you don't know what the GP stands for then, correct? It's just the zenith point, right? A GINA point? What we say. Let's try again. It's not a globe point, it's not a GINA point. I don't know what a GINA point is, but do you want to try again? So just to help out my Indian brother there. So बहुत बारी क्या होता है, many a time there are different dialects of Hindi all across India, and in many parts the sound z and j are mixed up, are interchangeably used. It depends on which part of the country that you come from. So it just sometimes happens. I'm not saying that his English is screwed up or anything, which it is. Still, it's just like he wanted to say zenith is the zenith point. He would have been wrong in saying that too, because the zenith point is the point directly above the observer. But here we are talking about the GP, which is the point directly below the thing being observed, the object, the star being observed. The point directly below it is the GP, the ground position, or maybe you can call it the geographic position. Geography, actual place on earth, point on earth, right? That's how the calculation of elevation angle works. Yeah. You see the base of that triangle? It's a flat line. It represents the earth. The earth is absolutely flat as it can be. शर्माओ मत अपने आप को फ्लैट अर्थर बोलने से. I'm a globe skeptic. I don't know what it is. It's fucking flat. Yeah, my English is not that good, so that's why I'm struggling, but I know what I'm saying. I'm asking what GP stands for. The full form, I don't know, but I know how. You don't know? What is Can you that? shut up then? So according to you, we've got a GP that you don't know.
So you think the guy who doesn't know needs to keep telling us about celestial navigation that you've charged us with not understanding based on what Jaren's told you with a tangent to a globe that he got from Matoon? Okay, so I ask you, what's a GP? You give us two different answers that were guesses that were completely wrong, and everybody in the chat was laughing their tits off at you. I'll just point that out. They all thought you were incredibly stupid with your Gina position. No, it's not a language barrier. You asshole, shut up, asshole. I won't tell you again. Do not interrupt me, asshole. I'm telling you about your Gina position that you don't understand because Jaren told you it worked on a tangent. Now I'll correct your dumbass based on your incorrect knowledge you got from Jaren, who doesn't have the slightest idea how this stuff works. He's telling you it works on a globe. That's what he's telling you. Because you're a cult member, when Jaren, your cult leader, tells you that it works on a globe, you nod. It's absolutely amazing, the number they've done on you. It's incredible. But you are prepared to nod and tell me, a flat earther, as a flat earther, how this works on a tangent on a globe. Because the GP meets the tangent, according to you. Is that right? GP, New Moon, stands for ground position. Now I'm going to ask you a question. Yeah. Is the 90 degree on a tangent from a globe the ground of the globe at 90 degrees? Yeah, watch. So what's the problem? It's just Did you hear my question? What do you mean, what's the problem? I'm asking you a question. If you don't understand the question, I can... Please mute whoever's come off mute in G+. I can repeat the question if you don't understand it. Do you not understand my question? Repeat again in No problem. 10 seconds. No problem. You described a tangent from a globe. That's a globe dangling beneath a plane that's called a tangent. On that tangent, you said there was 90 on the tangent. Now, the tangent is a straight line, horizontal in nature, with a sphere dangling below a point of that tangent, 1 point. Now, I'm asking, that's where you're measuring from, where that tangent point is, with the plane extending out that you said makes this all cushy. Now, I'm asking if the ground position meeting the tangent at 90 is on the globe ground. That'd be on the tangent, out in space, not on the ground. Is that a ground position on the globe, New Moon? No. No! So it seems Jaren has absolutely shafted you with stupid wrong information, where he didn't tell you that GP meeting a tangent isn't on the globe ground. So this fails. It seems that Toon misled Jaren, and Jaren misled you, his little cult, into thinking this works on a tangent when the 90-degree GP, that you didn't know what it meant, isn't on the ground anymore at 90 degrees. No, it isn't. That's right. It fails on its arse, New Moon. That's right. No. No, tangent is based on our position, right? Not The tangent hasn't got a ground position meeting it, you dumb. tangent is based. Hasn't got a ground position. That's right. Where it meets 90 isn't the ground. You stupid clown. No, it doesn't meet with GP. No, it doesn't meet the ground position. That's right. So it's not a GP on the tangent then, is it? Yeah, No, not yeah. You think it is the ground. So the tangent out in space, that's a ground position, is it? Out in space? Yeah, it will. Yeah. You think a point out in space is on the ground when it's out in space on a tangent to a globe that we don't stand on and you shouldn't be fighting for, but your cult members got you here on Flat Earth Debate fighting for the globe and the tangent in space that is definitely not on the ground with 90 to it. You think it is on the globe ground out in space at 90. Bro, if that was real, how Why are you asking me something? Is it on the ground at 90 degrees on the tangent? Yes or no? Yeah, yes. But Yes. So out in space on a tangent, it is on the ground. No, it isn't. Don't you know how to conceptualize this? Are you thick?
Now, if it's out on a tangent from your position, tangent to your position, the only point on the ground is your position at the tangent. Every other position is not on the ground. Do you not understand this stuff? Did Jaron not go through it clearly enough with you? There's no other position other than I yours. understand. There's no other position that's yours as asshole Fundy muting starts because I'm exposing the Aether cult. So you need to chant through me, don't you? Need to chant through me, right? Asshole. Asshole. Why didn't you debate it? Asshole. That means stop chanting through me. It's not an invitation to continue doing it. Asshole. Stop chanting through me. No, the tangent point is where you stand, and you're drawing a plane from that point. The only point on the ground for that tangent plane is where you're standing. Do you understand that? That the only point on the ground is the tangent point at the top of the globe where you're making this measurement from. Yeah. You do understand that's the only point on the ground on the globe. Yeah, I agree with that. Yeah. So the other point with 90 to it, out in space on the tangent, the ground position, we're going to call it, is that on the ground, given that the only point on the ground is where you're measuring this from and it's not underneath the star 90 degrees to it out in space? Is that on the ground, New Moon? Like if we are just beneath that star that we are measuring, then it will. No, we're not. We're not beneath a star. We're measuring, you complete clown. No, we're measuring a star that we're not under. Why do you need to take this to a scenario where you can't just admit that no, out on the tangent, Jaron told you makes this work on a sphere, so you, the flat earther, at Jaron's behest and advice, come here to argue how the sphere Earth does work. We've got 90 degrees to a tangent. Is it the ground position on the ground of the globe you're fighting for? Yes or no? Yeah. No, it isn't. No. The only position on the ground is the tangent you conceded to earlier. If the only position is where you're measuring from, the position you're measuring to isn't on the ground. It can't be. There's only one point on the ground at that tangent point you're standing. So do you not understand that every other point except where you're standing isn't on the ground? Are you too stupid to understand that this ground position that Jaron told you worked on a sphere because you can have a tangent isn't on the ground? You yet to concede that. So it's not on the ground out in space on that tangent. The ground position's not on the ground anymore. Do you understand that now? Yeah, I don't understand that, but Oh, I'll explain it again if you're too stupid to understand. I mean, obviously you're an Aether cult member, so you're obviously going to be stupid and need it explaining 5 times. We're drawing a tangent from a single point that touches the globe. Listen, you explained conceptually to me how you got a tangent to a sphere. Well, one point touches the sphere where the tangent extends from, where you are standing in your argument that Jaron, your cult leader of Aether, has given you to argue here for a globe as a flat earther. It's a freaking outrage. Nevertheless, you're here with your cult leader's request to fight for a globe and how it works with a tangent that moves from one point on the ground out into space. And that point out in space has got a 90 meeting it. Do you understand that, New Moon? It's your argument you gave to me at Jaron's behest, by the way. I'm just paraphrasing back what you told me. It's a geometry that works for the both. Well, don't tell me it's a geometry that works. Tell me you understand that the 90's meeting the tangent out in space. It's a Frickin' weasels. Cult. Jaron's cult. They're all weasels, just like globe believers. What turned you into? Turned you into an anti-flat earther, just like the anti-globe flat earthers. They're all the same. You're the same. You're a cult leader. You're cult-led. Model, then we will. Don't tell me about the model. Tell me about... I just love this man, Nathan Oakley. I can relate so much with whatever he says. And I find the same zeal and the same rigor for truth. Only the truth. Nothing but the truth. Nothing but logical arguments. Love you, Nathan. You are doing a great job for this so-called community. The only YouTuber that I'm paying money to. I love you, man. These two are such strong pillars of flat earth. And
in his debate with Whitsitt, here Nathan also declares himself as the new king of flat earth by toppling people like Jaren and Whitsitt and David Weiss from their thrones, from their high horses. On the basis of what? Correct arguments from the flat earth side. क्या एक्सप्लेन किया उसने कि फ्लैट अर्थर्स, जेरन, डेविड वाइस, विटसेट, लेट बॉब नोडेल, इनके कल्ट में पढ़ के अपने आर्ग्यूमेंट्स ऐसे बना लेते हैं कि वो एंटी फ्लैट अर्थर्स या फिर ग्लोब अर्थर्स के जैसा साउंड करते हैं. एग्जैक्टली उन्हीं के आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हैं और दूसरे फ्लैट अर्थर्स से डिबेट करते हैं. यहाँ पे भी एक फ्लैट अर्थर दूसरे फ्लैट अर्थर्स को करेक्ट कर रहा है. मैं भी वही काम कर रहा हूँ, नेथन भी वही काम कर रहा है. यही तो पूरी लड़ाई है. आपको समझने की ज़रूरत है. नेथन ये काम वर्ल्ड लेवल पे फ्लैट अर्थ का जो पूरे दुनिया में कम्युनिटी है, यूट्यूब में एटलीस्ट, बाकी का मुझे नहीं पता, तो वहाँ पे नेथन, बिकॉज ही इज़ एन एक्चुअल प्राउड फ्लैट अर्थर, he thinks it's worth doing it for the community. It is for the benefit of all. और इसीलिए मैं भी कर रहा हूँ. व्यूअर्स के बारे में कभी भी बहुत ज़्यादा केयर नहीं किया है, अभी भी नहीं करना है मुझे. The 90 degree to the tangent Jaren told you works. Does it have the ground position out in space? Yes, it does. Why is it now the 8th attempt for you to concede that the ground position out in space on the tangent isn't a ground position? Why can't you concede that? You need to fight for this globe working for Jaren. Bro, if you talk with Jaren, then he will. I have! Stupid clown. I have. I know his argument. I also told him that the ground position debunked this argument. I made it explicitly clear to him in written text message for him to peruse at his leisure. I explained this exact argument to him. You know what he did? He turned around and called me a scammer. It's because he's an asshole with a cult that's being threatened. So instead of listening to how the tangent's not a ground position, as I explained to Jaren, explicitly to him, personally, yeah, I have. Now... So a small anecdote here. And also something जो कि अभी मैं बात करते करते मिस कर गया. मैंने बताया कि ये दो जो पिलर्स हैं, नेथन ओकली के बारे में तो बताया, बट द अदर वन इज़ ऑब्वियसली क्वांटम इरेजर. एंड ऑब्वियसली उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में पूरा का पूरा बॉल बस्टर्स गैंग, फ्लैट अर्थ डिबेट पैनल, ये लोग तो हैं ही हैं सारे के सारे. लेकिन ये दो लोग, बट क्वांटम इरेजर था मेरा फेवरेट एक टाइम पे, अभी भी है. लेकिन नेथन ओकली, for his British flair and everything, and also his whole demeanor, overall मुझे बहुत पसंद है. And the other guy with a bit of a rude prick veil that he wears, so वो थोड़ा आपको arrogant, rude जैसा साउंड कर सकता है. That's Quantum Eraser, the bad guy so to say, but वो उसकी अपनी पर्सनालिटी है. एंड वो पर्सनालिटी इज़ टू डाई फॉर मैन. आर्मी मैन, मिलिट्री मैन, रिटायर्ड अभी, लेकिन सो पैशनेट. जब क्या बात करता है यार, क्या जोक मारता है. ये दोनों ही चीज़ें. वाई डू आई से आई कैन रिलेट अ लॉट? बिकॉज दीज पीपल हैव सच अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. आपस में जब बातें करते हैं तो इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू टॉक टू देम. आई रियली फाइंड इट इंटरेस्टिंग. सो वही बात है, अपने अपने चॉइसेस हैं, बट इट्स टाइम फॉर यू फ्लैट अर्थर्स टू मेक योर चॉइस. ये वाला वीडियो ग्लोब अर्थर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. आई एम एड्रेसिंग दिस टू फ्लैट अर्थर्स.
ईथर कल्ट ग्लोब में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है इस चीज़ से मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, बट हाँ हमारे अपने फ्लैट अर्थ के ग्रुप में, उसके कम्युनिटी में बहुत सारे लोग माइंडलेसली पैरट कर रहे हैं अगर कुछ चीज़ें, तो वो पॉइंट आउट करना ज़रूरी है. एंड दैट्स द होल पॉइंट फॉर द umpteenth टाइम. I'm explaining it to you, shit for brains. The tangent you drew that Jaren told you would be the reason you'd win with a globe with it working with celestial navigation has a GP out in space. So it's not a ground position, you stupid idiot. Why is it 9 attempts for you to concede something obvious? As a flat earther, you should be fighting for this, not against it at Jaren's behest. If someone else can address their point of view here, then I can No, understand. absolutely not. You will concede that Jaren's shit that this works on a sphere is wrong, because you don't have a ground position in space on a tangent. It's not a ground position anymore. When you concede that you came here to fight for Jaren's corner, then we'll move on. Till you do, you either concede or we don't move on. But the sky is also round according to globe model, So right? move on to a different argument. No. Tangent's not in space like Jaren told you to fight for. You need to concede that, you total weasel cult member. But you don't play videos, right? That's the I problem. don't need to. When we're talking about Jaren, I've spoken to him personally. This segue's not going to work. Jaren was wrong. He said it works on a globe with a tangent. That's what Toon told him, and Jaren believed him because he's idiotic. Meanwhile, we understand that a GP has to be on the ground, and that GP is on a tangent in space, making Jaren wrong. Also making him naive, because he believed Toon over us, who he condemned as being scammers. Toon, on the other hand, he believed. Well, that was bad because Toon was wrong, because the GP isn't in space on a tangent as you fought for. Flat earther, you say? Why the hell are you here fighting for a globe then? No, he was fighting for flat Earth, and on the discussion. How many times do I have to tell you, you don't need to speak for Jaren? You're not his representative here. Is that not clear? You don't represent Jaren. Me, on the other hand, I've spoken to him personally, and I can reflect on what I spoke to him about. You can't. So don't. Tell me about how wrong you were about the tangent in space. You came to fight as a flat earther for the globe at Jaren's behest, as a cult follower of the Aether. No, I have talked with Witsit about I've heard Witsit, not talked about him, not talked with him. I heard, and he was he have a different kind of explanation. Sorry, you think I give a shit about your conversations with your cult leaders? I need you to admit that Jaren was wrong when he told you it worked on a sphere. It doesn't. Why aren't you admitting that? No, not. I didn't do conversations with them, but I have I listened. don't care about your conversations with your cult leader you're absolutely obsessed with. Your chat with Witsit doesn't interest me. What does is you telling me it works on a sphere when the GP's out in space on a tangent. That's all I'm interested in. You hearing this, Jaren? Your audience has come here with the shit arguments that you put to them about how it does work on a sphere. Unsubscribe immediately from Jaren. He is not a flat earther. He sent people here, New Moon, to argue on his... अनम्यूट नहीं किया था. यहाँ पे एक पॉइंट बोलना था फाइनली कि जेरन बहुत ही बड़ा फ्लैट अर्थर है, बड़े लोग हैं ये, और यहाँ पे नेथन ओकली जेरन पे फिंगर पॉइंट कर रहा है. तो मैं तो कहीं पे भी नहीं हूँ जेरन को कुछ क्वेश्चन करने के पोजीशन में, लेकिन ये जो न्यू मून है, जस्ट इन केस ही इज़ द सेम गाय जो कि जिसकी मेरे साथ बात हुई थी 23 अगस्त को, और ये वही लड़का है जिसको मैंने पहले चाणक्य तिवारी के चैनल पे डिबेट करते हुए सुना था. तो इफ़ इट इज़ द सेम गाय, तो फिर तो जिस दिन मेरे को पता चलेगा ये बात, कंफर्म होगा ये बात कि इट इज़ द सेम गाय, मैं कम से कम 1 घंटे अच्छे से हंसूंगा कि या तो मेरे वीडियोस ही देख लेता एक्चुअली,
नेथन ओकली के पास जाने से पहले और अपना मुंह काला करवा के आने से पहले। या तो फिर मेरे से बात ही कर लेता क्लियरली। उस दिन तो मैंने बोला ही था कि बाद में बात करेंगे, यू शुड हैव गॉट इन टच। चाणक्य के टच में तो हुई मैं डायरेक्टली। मैंने अपने क्वेश्चंस भी क्लियरली उसी वीडियो के एंड में पोस्ट भी कर दिए थे कि तुम्हें क्या चीज़ें मैं क्वेश्चन करूँगा। सो इफ़ यू वांट टू कम प्रिपेयर्ड दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। भाई जस्ट इन केस इट इज़ द सेम गाय, एक फेक एक्सेंट इंग्लिश में बात कर रहा है। एंड मैंने इतना मेहनत नहीं किया कि चाणक्य के पुराने लाइव स्ट्रीम्स जो थे 4-4 घंटे के, वो सब जाके फिर ढूंढ निकालूं कि यही लड़का पहले ग्लोबस्टर्स बन के जब बात करता था तब उसका एक्सेंट कैसा था और अभी नेथन के साथ बात कर रहा है, उन दोनों चीज़ों को मैच करूं फोरेंसिक एक्सपर्ट के जैसा। तो मे बी आई विल डू दैट इन द फ्यूचर, बट फॉर द टाइम बीइंग नेथन हैज़ ऑलरेडी डन अ ग्रेट जॉब ऑफ समराइजिंग एवरीथिंग, जो कि मैंने भी बहुत ही लंबा जो मेरा स्ट्रीम हो गया 2 घंटे से ज़्यादा हो रहा है ना, वही तो 2.5 घंटा हो गया अभी। तो मेरा वही था कि आई एम गोइंग टू एंड माई स्ट्रीम जस्ट बाय शोइंग यू ऑन डिस्कॉर्ड कि उनका जो ये चलता है बॉल बस्टर्स शो चल रहा है, उसमें बहुत देर तक वो लोग शुरू में यही सब बातें करते हैं खाने पीने का और वगैरह वगैरह। उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। तो आई एम सपोजिंग कि अभी आधा घंटा हुआ होगा उनका, तो यही सब बातें चल रही होगी, मेन मुद्दे पे नहीं आए होंगे। इवन इफ़ आ गए होंगे तो लंबा चलता है उनका, कम से कम 2-3 घंटे तो चलेगा। तो आई एम गोइंग टू जॉइन इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि नेथन इतने अच्छे से फाइनल वर्ड्स अपने पुट करता है, जो मेरा पॉइंट था पूरे वीडियो का ऑफ एक्सपोजिंग द ईथर कल्ट, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। उसका कॉन्सिक्वेंस जो कि मैं इंडिया के फ्लैट अर्थर्स को पॉइंट आउट करता हूँ, बिकॉज आई डू नॉट वांट दीज काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। जब आप एक स्यूडो ग्लोब अर्थर बन जाते हो विद द लेबल ऑफ अ फ्लैट अर्थर, इट्स सच अ स्ट्रेंज thing to even imagine. But yeah, that is the strange world we are living in. His behalf as his representative that he's not. New Moon does not represent Jaren. He's just one of his cult cronies. And as a cult crony, he's followed Jaren's advice and told me celestial navigation works on a tangent with a GP out in space. No, it doesn't. Jaren's wrong. You hear that, Jaren? No. Your shitty argument failed on its ass when this guy put it to us too. No. Jaren doesn't know me. Even he don't know. So don't talk about him. Don't mention his name again. I will mention him and you as a cult follower of him. You've got no actual relationship with Jaren. You're just a cult crony repeating his garbage that we took apart because of the GP out in space you're still yet to concede. Because you're so indoctrinated with your cult following of Jaren that you refuse to admit where he is wrong. Because heaven forbid your cult leader of Aether's wrong about tangents that work on a globe. Oh, what's that? This man's supposed to be a flat earther? Ask yourself why you subscribe to him. He's sending people here to argue how a globe works. Yeah, I think you guys should do another discussion. Nobody asked you what we should do. You are not producing this show, you arrogant prick. But why you run away in middle? Because he was trying to put that conversation I had with tangent lines. Does it have a GP meeting it? No, but So it fails. So it fails. Because it's supposed to be the ground position and it doesn't have one. So it does not work where Jaren told you it did. But in geometry it will work, right? Because it's in geometry a ground position out in space that's not on the ground. No, it fails in geometry too. That's why they transpose it to the centre of Earth, at the equatorial plane. You understand that they transpose the angle you're detailing it out in space on the tangent to the equatorial plane on a globe. Of course you don't. Your cult leader Jaren didn't fully explain this to you. That's why he said it works on a globe. And you're now fighting for it working on a tangent out in space? No, my friend.
You need to transpose it inside the globe. Did you not know that? That's how you fight for a globe? Interesting that the flat earther Jaren is telling you how to fight very poorly for how things don't work on a globe, as he told you incorrectly. And we're correcting you on how it won't work on a globe, as you are incorrect about at Jaren's BS. And educating you on how the actual globers would argue this inside a globe. Did you appreciate this works in a globe for them? Clearly not. Yeah, your stony silence is all I need to know that your cult leader of Aether, Jaren, didn't educate you well on celestial navigation. You didn't even know what GP standed for. Yet you're here telling us how wrong we are because Jaren said we were wrong. Well, that was very, very poorly taken advice, wasn't it? Oh, you believed him? Oh, well, that was very stupid. Don't believe what Jaren says. It'll lead you to being absolutely taken to pieces here. When you say that a GP, that you don't know what it means, is actually on the ground out in space. That's not on the ground, you utter clown. That's where Jaren was wrong. And he's been told, making him complicit. Maybe he's behind the scenes having a damn good laugh at you. Because he knows this is wrong. I've already told him what I told you. But he didn't tell you that, did he? He let you go into the wilderness, parrot his garbage about it working out in space at a GP that doesn't exist, and get humiliated. But he knew it weren't a GP. Oh, Nathan Oakley is funny. He's damn funny. GP because I told him. Yeah, you know, I know I told him because I know when I told him. And he verbatim parroted back aspects of the things I told him, meaning he had read every word of it. But he was complicit in your humiliation, your cult leader. He was quite content to just tell you half a story about it working on a tangent out in space, on the ground out in space. Yeah, he's humiliated you, your cult leader. And he sent you here to fight for a globe. Do you not feel embarrassed? You're here fighting with a flat earther for a globe at Jaren's BS. Is that not embarrassing to you? Subscribe to Nathan Oakley. He's the best. He's ace. And like Kiwi puts it, this side of flat earth, this bunch of people, the Ballbusters gang, ये अपने आप को क्या बोलते हैं? The tip of the spear, the cutting edge of flat earth. फ्लैट अर्थ में जो बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो एकदम डिमोलिश कर देते हैं ग्लोब को फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. इफ यू वांट टू नो दिस थिंग्स, यू शुड बी हियर. नेथन ओकली. ना टू समराइज, मैंने बताया समरी बहुत अच्छे से नेथन ने खुद ही बता दिया. मैं बस ये सिनेरियो, ये सिचुएशन फिर से पुट करता हूँ आपके सामने. सो वी हैव फ्लैट अर्थर्स who follow other flat earthers with huge following like Jaren, and in order to endorse and to stick to, adhere to the words of their high priest, the one they follow, Jaren in this case, those flat earthers start arguing in favor of the globe earth against other flat earthers like Nathan, because they just can't help but defend their cult leader, even if it requires them to argue in favor of the globe and against actual flat earth arguments that hands down are nails in the coffin of the globe. पूरा इंग्लिश में बोला मैंने, वाह. So finally,
डिस्कॉर्ड दिख रही है? ये अपना होता है डिस्कॉर्ड पे। बॉल बस्टर्स लाइव चल रहा है अभी, इतने सारे लोग ज्वाइन किए हुए हैं। क्वांटम इरेजर का शो है, वो लाइव स्ट्रीम कर रहा होगा अपना कुछ प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। आज के मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स क्वांटम इरेजर के सोर्सेज से हैं। ही इज एस, वन टाइम फेवरेट। सो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा और फिर उसके बाद लाइव स्ट्रीम बंद कर दूँगा। मे भी थोड़ी देर, कुछ सेकंड्स सुनने को मिलेगा आपको। गुड नाइट एवरीवन। Is like everything else, heliocentrism has to hijack everything that has any validity to it. Like the simple example is buoyancy. They had to hijack buoyancy because force of gravity was debunked by buoyancy, basically. So they've hijacked everything that they needed to hijack, every natural effect that was validated